Good afternoon, everyone. Welcome to the day 20th of Techneev, which is the testimony of science and technology empowerment to the community. We are here to reflect the STI absorption capacity of the community. Today, we will discuss on three technologies. The first technology is the Nav Chaitanya Herbal Processing Unit, which is from MS Swapinathan Research Facility, Community Center from Kerala. The second technology is the assessment of bone health in transgender population, which is from AIMS New Delhi. The third one is eco-friendly utilization of hazardous pine needles of social benefits, which is from Mandi, Himachal Pradesh. Now, before we start today's program, let's have the glimpse of what we have in the last session of Techneev. The last session of Techneev was conducted on 30th June, and it is on the theme strengthening social capital. The first technology was the modernization of traditional pottery, where we have Dr. Lalit Ambeka, who is the change maker and also the former director of Integrated Rural Technology Center, Palakkad. Dr. Lalit Ambeka said that realizing the backward situation of pottered community, Integrated Rural Technology Center intervene to improve the income of the potters by applying the mechanism in the traditional potter's wheel and also changing their clay mixing patterns to further improve their quality of life. They have trained more than 500 pottery artisans across the Kerala state. She further emphasized that there should be a pooling of resources from across the state for the artisans like potters so that they have the best in terms of raw materials and their products manufacturing. She also emphasized that there should be some existing laws and rules that prevent locals from utilizing the resources available in the surroundings, and that should be made lenient so that the artisans and the craftsmen can tap the locally available raw materials and get benefit from it. We interacted with some of the community members also. So Ms. Rima, who is the member of Chitrakala Swayam Sahai SHG group, she said that the women potters are now actively involved in the business of pottery, and they also started making jewelry and other clay based products. They have gained the self confidence and become more self reliance. Similarly, Mr. Govinchi from Ritual Pottery community, he shared that the earlier when they went to the community, there was some type of resistance from the community members, but the young potters were very enthusiastic to use these modern technologies such as motorized wheels and pug mills, etc. And use of these technologies have now doubled their productivity and income. And now the whole community is now welcomed these modern technologies. Another member of the community is Mr. Sujoy. He learned the decoupage technique from IRTC, which is a computer aided designing of pottery products. He said that the value addition of our products have further increases our income to many folds. Now they are able to provide good education and livelihood to their children. In the same case, the second technology is pepper thresher machine, which is developed under the Innovation Science Technology Entrepreneurship Development Project of Pyramid Development Society. The pepper threshing machine is used to thresh the pepper berries both mechanically and manually. Uh, uh, the representative from the Pyramid Development Society informed that they have trained around 1,500 self-help groups nationally under various initiatives by different nodal agencies of Government of India, and they have sold this threshing machine not only to Kerala but also in the far-flung areas of India. He further said that in order to continue, there is a need to continue develop the tailor-made agro-based innovative technologies for women-friendly, which are women-friendly, viable, and give sustainable livelihood generation. Mr. P.K. Ravi Kumar, who is the change maker for this particular technology, who helped in disseminating this technology to the community, he emphasized that existing technology need to be replicated and should be aggressively popularized in the pepper growing areas of the country. He further said that the technology has brought forth a remarkable change in the society by generating sustainable livelihood for the trained people.
And coming to the third technology, which is on the crop residue biomass composting demonstration unit. The technology is again developed by the Integrated Rural Technology Center, Palakkad, Kerala. The unit has established by the Rural Technology Center to help the farmers to manage their crop residues into a valuable products. Professor B.M. Mustafa, who is the change maker and also the research coordinator in Integrated Rural Technology, told us that the farmers have now been encouraged to avoid using crop residues. They have encouraged to avoid burning of crop residues, and we have trained them to use these crop residues as a compost. Now 250 crop residue composting unit have been established across the Palakkad clusters, across the Palakkad district. All the 215 farmers have been trained in biocomposting. It includes 20 females and 8 migrant farmers also. The change maker, Mr. Gangadharan, KV and Gopinathji of Palakusi farmer community, told us that the cabin, the unit is consisted of a Kisan cabin, which is being designed for composting 4 to 5 tons of crop waste in the single go. After installing the unit, now we are using the manure prepared here, which cut our expenses further to buy the manure from the market, and thus helps in improving our saving our expenses. Their family members are now also contributing to this technology. They helped in collecting the waste from the field and saving money to purchase them. In this way, they saving money to purchase the fertilizers. So this is all about all the technologies we have discussed in our last session. Now to begin with our today's session, which is on the theme integrated community resilience, I invite Dr. Seerath, which is my colleague here in Vigyan, Prasar, to take up the first technology. Over to you, Ms. Seerath. Thank you, Dr. Nidhi. Am I audible? Yeah, very much audible. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for taking the time to join us. So the first technology that we'll be discussing today is Nava Chaitanya, a herbal processing unit. It is a women initiative that produces herbal home remedies. It has been promoted by the MS Swaminathan Research Foundation and the DST Seed Division. The change maker is Dr. N. Anil Kumar, Senior Director, MSSRF Community Agrobiodiversity Center, Kerala. He holds a PhD in systematic botany with a specialization in angiosperm taxonomy, and his expertise is primarily in the field of sustainable management of genetic resources and community development. At the Community Biodiversity Center, he is directly involved in the capacity building of local institutions, policymakers, and tribal youth to undertake sustainable livelihood and poverty reduction initiatives. The beneficiaries of this technology are the representatives of Nava Chaitanya from Pozu Thana, Wayanad. So I would like to call upon Dr. N. Anil Kumar to please take over and give us an introduction of this technology. Thank you, Mr. Sirat, and thank you, DST, for having us to present this. Is my voice audible? Is it, yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay. Okay. So I am with my team here, my colleagues from Swaminathan Foundation, and also the members of this Nava Chaitanya group. So we have a group of some 10 members, and most of them are here with me. So the next 10-15 minutes, I will introduce what this Nava Chaitanya herbal processing unit is doing, and what is the background of this activity. So foundation, we have started a program called Green Health Campaign. Yes. So this green, as the name implies, the health is greening the health, because if you see the health sector is the most exploited sector, most especially in case of the poor community, the health is there in their hand. And if you see the traditional healthcare heritage, in particularly
in the mountain areas where the tribal community or the smallholder community, their primary healthcare needs were met through their household remedies. But of late, this tradition has disappeared, and is disappearing. It was disappearing. Now, but we can see the government of India is taking very effective steps to revitalize the traditions. Particularly when we celebrate our 75 years, one news which because I was particularly interested to know more about that initiative, was the World Health Organization and the Ministry of Ayush. They have joined together to start a multi-million-dollar initiative in Gujarat to revitalize the traditional medical system or traditional healthcare system. So that gives us confidence of what we are doing in this corner of country. So MSSRF, we have trained around 800 women in some 50 to 60 groups, I would say. Each group average 10 to 15 members. And this program started in the year 2011, 2010, 2011. And these many number of people trained in the area of basically three areas. One is to identify the medicinal plants and to identify the primary healthcare status of the region. So these women groups largely from Wayanad district. Wayanad district of Kerala is part of the Western Ghats, and the Western Ghats is one of the biodiversity hotspots of the world. And this Western Ghats is the most densely human populated region. And Wayanad is the hottest hotspot in this Western Ghats, where the smallholder farming community and the tribal community forms the large majority of the community. So these people have been trained in identifying the medicinal plants and identifying the healthcare traditions, the household traditions. And then we have selected some of the primary healthcare immediate needs. In the sense, say for example, your cold or your skin care or your simple headache, and such kind of wherever you can have the first aid treatment or first aid health ingestion. We have selected some 30 or 35 different products, and we have trained them. That was the second level activity of the program. And third level, we try to build market for the local level market to have an addition to this community. So out of these 800 women, they were spread out not only in Wayanad, even from the neighboring districts like Calicut and Malappuram. So I am introducing one of the groups who are now very near to us. We have selected this group because it is closer to our foundation, our center here in Wayanad. And we are sitting in the production unit now. So this production unit, for the last 10 years, this group is active. And this production unit we have established for the last 4 years, we have established. And if you see this group, Nava Chaitanya, Chaitanya is the word means, it is the vigor or the newness. And it is the new vigor. So Chaitanya is the vigor. So the new vigor to revitalize our tradition. We have the technological intervention, as I said, the identification of the medicinal plants, correct identification. If you see, in the market, the mainstream market, the product, now our consumer base is because of our the correct drug which we use for preparing, or correct planting material which we use for this material. So this the taxonomy part of this species and the cultivation technology. Now
this group, I will introduce. They are having some 17 major herbal products now. And this, if you see, we have assembled many of the medicinal plants here. For the 17 herbal products, at least some 50 plant species are employed to produce these products. And these 17, out of these 17, 50 plant species for the 17 herbal products, many of them are cultivated in their backyards, and also in some are in organized cultivation. So that technology, where the good cultivation practices, that technology also we have passed with them. And then the processing, now the unit here it is working for the last 4 years, a good production practice. The technologies for the processing, technologies for the storage, and also for the better packaging and such kind of technologies which we are promoting. And also we trained, as I said, we trained in skills like agronomic, in the cultivation techniques, the skills for the management, agronomy, management of pests and diseases, and so on. And now they are skilled in producing not only the herbal products, but right from it's a seed selection for the plants to the cultivation to the processing to marketing and the distribution. So I'm extremely, before this meeting started, I had a 1 hour interaction with these team members. I myself was very fascinated to see their enthusiasm and so on. You will understand them, you will interact with them. And with the support of DST, we had given the necessary machinery support. For example, the pulverizer, the electric dryer, the band filler. Before this technology, this kind of technology given, they had been using the conventional method, in their kitchen. They had been using it. Now they are organized and they are under this roof. And this building has been given by the local self-government, the local panchayat. And there is, Kerala is very famous for the women institution called Kudumbashri. And this Kudumbashri unit now they are helping, especially for the large scale marketing, the Kudumbashri is behind that. So the actors, MSSRF had given the knowledge, MSSRF given the technology, and the panchayat had given the building, and the Kudumbashri institution is helping the market. And the products, let me tell you some of the products: herbal tooth powder, herbal shampoo powder, henna powder, indigo and indigo powder, aromatic turmeric powder. Mostly it's a powder-based products, and also this amla powder, turmeric, ginger, triphala powder. And there is an oil called multi-purpose oil. And this multi-purpose oil, it is very effective oil. In fact, it is for this minor cuts, minor wounds, it immediately heals. You need not worry much about your such kind of smaller cuts or wounds. This oil is a kind of very, very effective oil. We also give support to the marketing. MSSR has formed a farmer producer organization, and they have an outlet in the town. And these outlets only green products, whether it is food products or this kind of herbal products. And these people are linked with that FPO. We also help them to participate in the national and international state and international fairs, where they can showcase these products apart from their local market. And there was one result of this initiative of MSSR was one pharmaceutical firm out of as an outcome of this 10 years training had been formed called Vanamulika. And this Vanamulika is with some 41 members. They are in a different part of Wayanad. I'm not introducing now that Vanamulika. Maybe
in some other occasion, I want to showcase that case as well. They have now a big one, a very big facility, and they have a good marketing channel. Not only they are marketing the herbal products, but organic food products. And their major market is Germany. So we will have maybe another occasion to present that case as well. And this is about the technological intervention. Coming to the challenges and risk. So we would say the effective linkage of modern science. There, we see there is a challenge, because if you see this kind of herbal products, there is only the market is very limited. The large majority think these are all fake products, or there is no time. So there, as I said, the World Health Organization, their setup is to bring that time. And the MSSRF is also trying to bring the scientific credibility. Now at the taxonomy level or the identification level, that science is there. Or the agronomy level, that science is there. But the product level, how safe it is, or how complementary it is for the human body, so that science is, I would say, inadequate. And that part is a big challenge to link with the modern science. Another challenge, the cheaper products in the market now. For example, our group is producing tooth powder or the other products. I could see that the kind of materials they use, but the price may be a little bit higher because compared to the other products. But for an ordinary consumer, they will go behind such kind of cheap products. So how to get that science credibility and plus, the economic value for the genuinity of the material. So that is the second challenge, the cheaper products. And the third, now our devices, we have only minor devices now, and we are looking for kind of adding some more the kind of upgraded materials we need. And another challenge, the big challenge is the marketing challenge, especially the kind of outside market. Because the current market is purely the local market or the community level market, mainly. So how we will expand our market, that is also the challenge. And coming to the technology, how the technology helps. So the technology helped, one is it reduced the drudgery of the women. Because initially they have been doing it at such a household level with so much of time employed there. Now because of our help, that technology, that drudgery has been reduced. And the time they had the better time. Now, when I interacted with them, this is only their side income. They have the other major income source, like some of them are farmers, some of them are even political. One lady was actually a leader of the that Kudumbashri unit. So they are into the social activities as well. And they also now the technology helped in hygiene and the cleanliness of the, so now the good production practices. So we that way we can now trust this to produce, because we have confidence. Because the primary group has confidence how scientifically they are producing, how cleanly they are producing. And the technology also helps in labeling and packaging. So now we will show you the kind of the products here. Maybe we can show some of the products. This is the tooth powder. This is multi-purpose. So could you bring it closer to the camera? Could you bring? Yes, thank you. This is the that multi-purpose oil I was talking about. You can see very this is a glass bottle and very attractive labeling. Yes, sir. This is the powder, that tooth powder. And I would say some 10 different herbals are used there.
And instead of going for this paste, thing, if we can produce in the paste form, it is fine. But since it's in a powder form, there are not much. This is that henna thing. So what I'm trying to say, there are many products here. All these products nicely packed and labeled. So that is one aspect. And another challenge, I said, challenges and technology now has helped, but that is not enough. And we should be able to help them in the upscaling their market. So what in the future, before that, coming to the future, before that, their income. So now, when I interacted with them, their average income, 5,000 rupees per month, every person is getting, average. So which means 5 to 6 lakhs a year. That is a fairly good income. When I inquired about even their children and, they're the kind of, how are they now? They are all, in a kind of a better position now, in the sense poverty, that dimension is not there. So I could see that. Kerala, larger development, not because of this intervention. Kerala, that way, is very progressive states. So this technology, I would say, help them at 3 levels. One is the income level, the economic side, and the second level, the social side. They could revitalize their cultural heritage, and they could improve social status. And they are all confident women. Even they have 2 layers, 3 layers I can see. Upper, the senior level, the medium layer, and the youngsters. So I asked them, the youngsters, whether are they interested. So the youngsters are very much interested to take up this forward. I think I have to stop here now. And the environmental, the social side and the environmental side, since I am also scientist passionate in the environment dimension, when I saw the conservation of these medicinal plants, these many number of medicinal plants have been conserved in the households with the knowledge. See, the knowledge of, I tested one younger girl here. She has adequate knowledge because the senior woman transferred that knowledge. She knows what is the name of the plant, how it is used, how it is cultivated. If this technology wouldn't have been there, these plants wouldn't have been conserved there in the home garden. So that environmental footprint. If you take, for example, the photosynthesis, I said actually you are sequestering more carbon. Because the household greenery means more carbon dioxide has been absorbed. So I would say this is a carbon negative enterprise, a carbon negative, socially responsible, economically viable enterprise. So that in the future we want to see it is developed in the larger scale. That is what the challenge for which that my note of that the WHO, Prime Minister Modi is actually very much fascinated about the revitalizing our the health and the conservation heritage. So we are looking forward to a link through DST, through this DST, science for societal equity and societal science for equity, empowerment, and development. So that field is. Thank you, sir. Which, so how do you go about the product testing? Like, how do you approach the organizations which test the products? So we can now, we will, initially we tested some of our products with the CSIR, Central Food Technology Research. So especially the food thing we have tested there. And the herbal products, the quality testing, the regional laboratories are there. We are doing that. And we also had a tie-up with this National Institute of Integrated Science and Technology, NIST, in Trivandrum. And the NIST actually helped in testing many of these products. So that we are ensuring the quality testing.
Hello. Yes. So that is about the introduction. That is what I want to introduce this group. Are you audible? You're audible. I can hear you. What about us? Okay. So the next question, did you face any challenges in marketing of these products at the community level? Because nowadays people, they tend to use a lot of like the conventional medicines. So what challenges did you face in like marketing these to them? No, the marketing challenges, as I told you initially, in the market, the mainstream market, the products are there. Those products, the price, if you see, the price is there. And there is now, they have a organized marketing is there, their niche marketing, where the regular consumers. I asked the same question. For example, they are preparing an ingestible product called Karkidaga Lake. Karkidaga Lake. That is a kind of jaggery or the jaggery based legume. And they have got organized the customers for that. Demand is there. What I'm trying to say, for the niche market, the demand is there. So based on the demand only they produce. And out of these 15 products, most of them are based on the demand. And mouth-to-mouth marketing is also there. So whomsoever use this product, they tell others and they come there. But for the larger marketing, the challenge is now they have license for the food products, but for the herbal products, the Anamolika, which I said, that enterprise, we are trying to link some of their products for the larger marketing through the Anamolika. Okay, sir. And do you plan to like expand this and like sell it on e-commerce platforms? We are very much we want to do that. E-commerce platform would be very good, and MSSR would be happy to provide the knowledge support for the group as well as for the consumer and the trustworthiness, because now we are championing for them. So what we are championing for them on the quality of the material, because now we know how it is. Okay, some of the products, these products, out of these 15 products, I told them to prioritize 5 products, which they have confidence and they have demand. And some of the new products, I was telling from my own personal experience, some kind of, the floral powder, the flowers. For example, if you take our shoe flower, hibiscus, the shoe flower, dried shoe flower is actually, you can make it into, you can boil it and drink that colored shoe flower water. Is good for reducing your BP, good for reducing your weight, and good for reducing the sugar level. So that my actually experience that. So I was telling that I can be a champion for promoting such kind of projects. Okay, so thank you, sir. So we would like to talk to the beneficiaries. They are here. So one by one, maybe. Or will they speak in? Will they be speaking in Malayalam? They will speak in Malayalam. And could you translate it for us? One of us will translate. Okay, so thank you, sir. Hello. Okay. Namaste. Pranila. Member. ഞങ്ങൾ 10 പേര് കൂടിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത്. 10 വർഷം ഞങ്ങൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിർത്തിപ്പോയ സ്ഥിതിയായിരുന്നു. 4 വർഷമായി തമിഴ്നാട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിലുള്ള സഹായം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അതേ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെടികള് എല്ലാ പേരും അതിന്റെ ഉപയോഗമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടി. ആദ്യം ചെടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. അവർ നമുക്ക് ചെടിയും തന്നു. കുറെ നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചെടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തമിഴ്നാട് ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നു. ഒരു വനമൂലികയുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നത്. ഒരു വർഷം ഓരോ മാസം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രകാരം അങ്ങനെ 12 പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. നമുക്കത് തെളിയിച്ചു.
അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ആദ്യം നമുക്കധികം മാർക്കറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വീട്ടിലെ അവരെ പരിമിതികളുണ്ട്, അവരുടെ വീട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കാർബോണിനെ കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മഴയെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതുപോലെ അധികം വെയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു പഞ്ചായത്ത്, നമ്മളും പഞ്ചായത്ത്, ഞാനൊരു സീരിയസിന് കുടുംബത്തിന് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് വരുന്നത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനോട് കൂടി ചെടിയും എന്ന പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ, അതിന് വേണ്ട ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അധികം വെയിലത്ത് വെച്ച് അധികമായി പോയാൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടൂല. ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈവർ വന്നു. അതുപോലെ പൊടിക്കൽ, ഞങ്ങൾ പല മില്ലുകളിലും അത് കൊണ്ടുപോയി പൊടിക്കല്. പലർക്കും നമുക്ക് പൊടിച്ചു തരാൻ താല്പര്യമില്ല, കാരണം അവർക്ക് മരുന്നിന്റെ ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല അവരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മരുന്നിന്റെ കൂടെ കൂടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വരലിട്ട് പൊടിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടാക്കല്. പിന്നെ ഇവർ ഇതെല്ലാം തന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യമായി. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ചെറിയ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു. അത് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യം ഒരു വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു മാസം നമുക്ക് 500 യൂണിറ്റിലായിരുന്നു കിട്ടുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ആവറേജ്, ഒരു വർഷത്തിൽ ആവറേജ് 5000 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അംഗീകാരം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുന്നത്, വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഡോക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡി അസുഖം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് അതിനെന്താ മരുന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രശ്നം തന്നെയുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഒന്നും കൂടി വിലപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസം ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരാള്, ചെറിയ ചെറിയ ജോലിയുള്ള ഒരാൾ 2-3 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വരുമാനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളും നമുക്ക് സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അവർ എന്ത് സംശയങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. നമ്മൾ അനുസാരണയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു വരേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ഹെൽപ്പും അവരെ നേതൃത്വത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമില്ല, അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ മാർക്കറ്റിലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനും എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന ദിവസം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്ത് സംശയമെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കും. രാഷ്ട്രീയ പകലായ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം ചെയ്തു തരും. My name is Bhanya, and Hello. I'm helping. Could you please turn the camera to your side? You're not visible. Okay. Yes. Yeah, I'm working in installation, and I'm helping in this program of Utilization and working with Dr. Kumar. She is the one who talk now is Ms. Sabina, and she is one of the member of Chaitanya, and she has been working with the group for the last 10 years. And they are 10 members of that group, as Dr. Kumar has already explained through the processing. She was also mentioning those processes through which the group has been established and developed. The Entrepreneurship Foundation has provided some training, hands-on training in the making of medicinal plants, formulation, and getting identified the medicinal plants, how to identify the species, the proper species to be used, and the way which the receipts of the traditional health formulation. And then earlier they were used to make all these products at household level, and then they have a lot of difficulties, like there was limited space, they have to utilize the kitchen, and there was no hygiene was not maintained. So they needed a proper place. So this panchayat has given this building, and after getting these technologies, mechanical technologies like machineries like pulverizer and dryer, they have
it was very easy for them. The treasury has been reduced so much because it was very difficult for them to dry the raw materials in particularly in rainy season. And whenever it comes to dry and powder the product, it was very difficult for them to depend upon the local flour mills which were available. And there also this will get contaminated with other chili powders and things like that. So she was explaining those difficulties which they could now overcome with the machinery support, pulverizer and dryer. And now they have both trained in packaging and the labeling of their products. And initially, they didn't get any market, then a lot of difficulties, and also the income was very less, just 500 rupees per month they were getting. So now it has improved, and the marketing through industry and all, they are into the market now. Fairs and national and state fairs. Now they are able to find some market for their product, and now this unit is working well. That's how the village was playing that. Maybe some other. So, like, has she witnessed any changes in her livelihood and has her income increased? Yes, that's what she was mentioning. Earlier, they were only just 500 rupees or so per month. Otherwise, before getting this business, they were nothing or they were doing nothing. Some of them were involved in some of the like Anganwadi workers and all. But now they have a daily business and their life has been improved, their livelihood has been improved. They are getting some 5,000 rupees. That is on an average actually, because seasonally only they are orders for some orders, something. For example, in monsoon season, they'll be getting orders for this India, which is their health supplement. So based on that seasonal, maybe we have to calculate their income. But on an average, now at present, they are managed to get 5,000 rupees, so which they can use for their family expenses. Okay, thank you. Is there any other beneficiary? Yes. Okay, thank you. നമസ്കാരം. റാബിയ, ഈ ഇതിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രകൃതിയിലുള്ള നശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ അതൊരു ഉപകാരമുള്ള ഔഷധമാക്കി തരാനും പിന്നെ കുറെ പച്ചമരുന്നുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്കൊന്ന് പുനർജീവിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനോ അതിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനോ അത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അധികം പേരും പൊള്ളല് ഉളുക്ക് ചതവുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിളിച്ച് സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രകൃതിയിലെ കുറെ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആളുകൾക്ക് അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. Thank you. She's Rabia. She was also explaining a lot of rare species which are being species that are facing threat of extinction has been able to conserve through these activities. So they also have the knowledge now, and they are able to conserve those practices also. Now, Camilla was saying the same thing. Like the neighbors and their family members are all people who are around them consider them as the huge healers actually, and spend them for some other primary ailments. Okay. Thank you. Like I have one question. Like they have all undergone training for some years now. So do they plan to open like individual enterprises or something like home-based? Do they have some plans at individual level? Now this unit has been established for them. They are all members, and they wanted to expand their business. I think they didn't discuss such plans now. As of now, maybe this unit as such they are going. They wanted to start their present business actually. The quantum of market. Hello, I couldn't hear you. Sorry.
Hello, am I audible? Yes. Yes, now you are. But oh, I. Yeah. They don't have a plan for individual, but Okay, this as a group, yeah, Uh-huh. they want to Okay. expand the market. Okay. Thank you. Thank you so much for joining us and enlightening us about this technology. Thank you. For the next session, I would like to call upon Dr. Abhishek Mehta, Senior Scientist, DBT. Hello, Namaskar. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. So the next session is assessment of bone health in transgender population of India. So this study is conducted has been conducted by AIIMS New Delhi. So to begin with, we all talk about gender parity, and when we talk about gender parity, we mostly focus on male and female or rights of the females against males. But we always forget about our third gender, or we call transgender. And these transgenders, they are an important part of our community. And very unfortunately, they are being missed from most of the things. हम इनकी बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में लगभग 5 लाख ट्रांसजेंडर्स थे, जिनका नंबर ऑब्वियसली अब उस समय उससे भी ज्यादा होगा। तो अगले सेंसस में हमें और सही पिक्चर पता लग पाएगा। 2014 में हमारे हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जो आई थिंक बहुत वेलकम करने लायक था, जिसमें इनको एक थर्ड जेंडर का राइट दिया गया, एक आइडेंटिफाई किया गया, ताकि हम इनके राइट्स के लिए फाइट कर सकें, इनके राइट्स के लिए और आगे बढ़ सकें। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हेलो हेलो Yes, sir, your voice is coming. Okay, sorry, I thought there's some issue. Okay, so I was saying that तो जब हम ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब सच में जो इशू है, मतलब जो पिक्चर इस समय सिनेरियो है, दैट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। 2019 में यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी व्हिच वाज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट डायमेंशंस फॉर एलजीबीटीआई इंक्लूजन इंडेक्स, और वो इक्वली अप्लाई होता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी। यदि हम बात करें तो इन 5 एस्पेक्ट्स में आता है पॉलिटिकल एंड सिविल पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल सिक्योरिटी एंड वायलेंस और इकोनॉमिक वेलबींग। इनमें हम बात करें तो ऑब्वियसली हम हर चीज पे काम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इट टॉक्स अबाउट देयर हेल्थ एस्पेक्ट्स, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हेल्थ एस्पेक्ट्स इज असेसमेंट ऑफ देयर बोन हेल्थ। बोन हेल्थ, it depends not only on our diet but also on the hormones, and obviously in transgenders there's hormonal imbalances much more than the males and females, and their hormone therapy, all these, so these all things affect their bone health. And other important aspect is accessibility to healthcare for these people. Obviously there are limitations to the access, and on other side there is inhibition from these people to come to the normal health community. दोनों तरफ से inhibition है, मतलब लोगों में हम बात करें तो acceptance इतना नहीं है, और यदि हम इनकी तरफ से बात करें तो मुझे बुरा लग रहा है ये कहने की मैं एक अलग से कम्युनिटी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। दे आर ऑल पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, बट हाँ एक इनहिबिशन दोनों तरफ से है, तो इस वजह से इनकी हेल्थ हमेशा नेग्लेक्टेड रहती है। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो एम्स न्यू दिल्ली में प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा और डॉक्टर भावुक गर्ग ने इनिशिएट किया, जिसमें इन्होंने इनके बोन हेल्थ के बारे में स्टडी की, आई थिंक ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम so today I welcome Dr. Vivek Dixit, who is scientist D at orthopedics in AIIMS. इसके अलावा मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ श्री रानी पटेल जी, जो कि आरोहण के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे आज हैं शशि सहाय जी, दीपिका ठाकुर, राम प्रकाश जी। तो आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे ज्यादा
समय नहीं लूंगा और सबसे पहले इनवाइट करता हूँ श्री विवेक जी को, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएंगे। नमस्कार सर। अच्छा, ये 5 to 3 होना चाहिए। धन्यवाद अभिषेक जी। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज। धन्यवाद। एक सुंदर प्रस्तावना रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विज्ञान प्रसार का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्हें आपके गुड ऑफिस ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर के, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर के ट्रांसजेंडर समुदाय के, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी इस बात को बताया कि किन प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से व्यापक हैं, जिसमें चूंकि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हैं तो हम भी एक हेल्थ कैपेसिटी में, एक हेल्थ वर्कर की कैपेसिटी में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इस मूल धारणा को ध्यान में रखते हुए 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा सर, डॉक्टर भावुक गर्ग की लीडरशिप में एक प्रोजेक्ट का ध्यान आया कि 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को एक थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया। जैसा कि हम सभी लोग बहुत पहले से जानते थे कि हमारे समाज में ये बहुत पहले से हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, और कई बार होता था कि वो मतगणना में तो रहते थे पर जनगणना में नहीं रहते थे, और उसकी उपेक्षा के, उनके कॉर्नर्ड होने के अलग अलग कारण बीच बीच में अनुभव से और ध्यान में आते हैं। परंतु एक स्वास्थ्य संगठन होने के नाते, स्वास्थ्य प्रहरी होने के नाते हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने भी बताया एक हॉस्पिटल सीकिंग बिहेवियर इस समुदाय का नहीं दिखाई देता है। हम ज्यादातर नहीं देखते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अस्पतालों में अपने इलाज के लिए नहीं आ पाते। दूसरी तरफ आपकी बात भी बिल्कुल मैं ठीक मानता हूं कि कहीं ना कहीं उपेक्षा शायद समाज के दूसरे वर्ग की तरफ से भी होती है, जहां पर उनको एक हेजिटेंसी महसूस होती है कि चूंकि हमें यहाँ पर हमारा ड्यू सम्मान या उस प्रकार की सुविधाएं शायद हमें उतनी नहीं मिल पाती, तो एक दोयम दर्जे का एक ट्रीटमेंट मिलता है या उस तरीके से एक संकोच आता है। तो वो मैं मानता हूँ आपकी बात सही है कि वो दो तरफ से उसकी पहल होनी चाहिए। तो हमने अपना हाथ पहले आगे बढ़ाया ये सोच करके कि चूंकि यदि आप हॉस्पिटल नहीं आते तो क्या हॉस्पिटल आपके पास जा सकता है क्या, इस धारणा को लेकर के हम आगे बढ़े। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस परियोजना के लिए आर्थिक सहायता दी, और इसमें प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा, डॉक्टर भावुक गर्ग, प्रोफेसर राजेश खडगावत जी जो कि इंडोक्रिनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर यतन पाल सिंह बल्हारा जो कि साइकेट्री के एक्सपर्ट हैं, इस प्रकार से एक पूरा एक जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट टीम एक बनी, ताकि हम इनके मानसिक स्वास्थ्य का, इनके अस्थि स्वास्थ्य का, साथ में इनके इंडोक्रिनोलॉजिकल या हार्मोनल स्वास्थ्य का हम किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, ऐसा लिख करके हमने एक परियोजना लिखी। उसका मुख्य शीर्षक था असेसमेंट ऑफ बोन हेल्थ इन ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो बोन हेल्थ केवल इसलिए हमने लिखा क्योंकि वैसे तो हमें मेंटल हेल्थ भी चेक करना था और ग्लाइसेमिक भी करना था, और बहुत सारे अन्य पैरामीटर्स भी, होलिस्टिक हेल्थ के पैरामीटर्स भी चेक करने थे। बोन हेल्थ हमने इसलिए प्रथम दृष्टिया रखा क्योंकि आपको भी ध्यान में होगा, आपके जो भी लोग इसमें लिसनर्स हैं उनको भी ध्यान में होगा कि भारत में एक सामान्य औसतन की जो कि 50 साल से ऊपर है, उसकी अस्थि स्वास्थ्य बहुत एप्रिशिएबल नहीं है, बिकॉज कि पूरे भारत में विटामिन डी की कमी है। 90% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है, जो कि बड़ा मुख्य रिस्क फैक्टर है। दूसरा, भारत का जो ट्रॉपिकल कंट्री का जो स्टेटस है, उसमें जिस दक्षांश पे वो स्थिति है भारत की, वहाँ पे जो क्लाइमेट है, साथ में जो हमारा परिधान है, साथ में जो हमारा भोजन है, साथ में जो हमारा एक कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा
रंग रोगन है या जो हमारा एक जिसको हम स्किन टोन बोल सकते हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके हमारे अस्थि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा ध्यान में रख करके हमने मुख्य फोकस अस्थि स्वास्थ्य पे ही रखा। किन्नर समुदाय पे ही क्यों? उसके कारण मैंने आपको बताया कि पुरुष का और स्त्रियों का तो हमें ऐसा ध्यान में है कि उनका अस्थि स्वास्थ्य का एक मीन क्या है, एक एवरेज क्या है, ये तो हमें पता है। परंतु अब ये समुदाय भी चूंकि थर्ड जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई हुआ, तो ये भी हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमारे परिवार के ही एक अंग हैं। इनकी चिंता करना और इनके स्वास्थ्य का अवलोकन करना, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और अस्थि स्वास्थ्य का एक और करने का मुख्य कारण यह भी था, क्योंकि ऐसा ध्यान में आता है कि हमारे समुदाय के लोग हार्मोनल असेसमेंट स्वयं लेते हैं खुद, और हार्मोनल असेसमेंट लेते हैं इन ऑर्डर टू चेंज देयर जेंडर ऑफ चॉइस। कई बार ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, कई बार थोड़ा सा मेस्कुलिन दिखने के लिए, कई बार थोड़ा सा फेमिनिन दिखने के लिए वो ऐसा ट्रीटमेंट लेते हैं। अन्य जो एक ऐसे ध्यान में आता है कि हाई रिस्क बिहेवियर भी रहता है। दूसरा, वो सेल्फ ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, कुछ हेजिटेशन है जिनके कारण वो अस्पताल नहीं जाना चाहते। यहाँ तक कि जो अपनी लैंगिक आइडेंटिटी है उसको भी चेंज करने के लिए वो सेल्फ ट्रीटमेंट लेते हैं अपनी परंपरा या अपने मित्रों या अपने साथियों के साथ। ये सारा अनरेगुलेटेड अमाउंट में हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने से बहुत ही बुरी तरीके से हमारी हड्डियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा ध्यान में रख करके ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना 2018 में शुरू हुई और हमारे साथ में, जैसा आपने बताया, मैडम रानी पटेल मैडम है जो कि आरोहण की चीफ हैं और बहुत बड़ी फिलांथ्रोपिस्ट और बहुत सोशल वर्कर हैं, बड़ी चेंज मेकर हैं। अब्दुल जी हैं, शशि जी हैं, राम प्रकाश जी हैं और भी हमारे सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं। तो हमने ये प्रोजेक्ट आप ही लोगों की मदद से समुदायों में जा करके, कैंप लगा करके, उनको कन्विंस करके, क्योंकि ज्यादातर ध्यान में आता है कि जो समाज में जो लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर काम करते हैं, 90% उसमें से कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन या उनको सेक्स एजुकेशन या उनकी HIV काउंसलिंग या उनकी HIV एजुकेशन के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं। तो उस समाज के अंदर भी एक ऐसी धारणा है कि यदि कोई चिकित्सक या कोई साइंटिस्ट या कोई अगर लोग हमारे पास आ रहे हैं तो कहीं हमें केवल रिसर्च का तो वो हमें एक पीस नहीं बना करके छोड़ते। हम उनके पास गए, हमने उनसे ये कहा कि हम पहली बार आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप हमारे पास नहीं आते। हमारे पास वी हैव समथिंग स्पेशल टू ऑफर यू absolutely free of cost, and also to give you in such a way so that after us you can take care of your bone health, because your bone health is really requires enormous attention. And we gave them bone health education with a team and convinced them to participate in this STD, which is not a one-way traffic, which is also a kind of a dialogue. Several dialogues we did, and after that we very amazed to see the response of this community, that wholeheartedly through Arohan, through Rani ji, through Abdul ji, majority of the PGs have joined together under one roof at several place of time, at several places of the in Delhi and NCR. So we have conducted several health camps and recruited the transgender in this study and given them a baseline health report, which often they or seldom they get. And after that, we have given their hormonal assessment report. We have given their bone mineral density report, and also abreast with the the results of that study. And also, whenever they felt that apart from bone health, they have some kind of requirement to visit some other department, we have also helped them. So this is a brief of in coming times, in the next whenever my term will be. So this was the brief of the introduction of this AIMS initiative. Over to you, Abhishek ji. थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से इस प्रोग्राम का आइडिया आया, किस तरीके से इसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। आपका आइडिया बहुत अच्छा था, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज ये जो हम कह रहे हैं कि ये लोग हॉस्पिटल नहीं आ पाते,
तो स्किनर समुदाय को हॉस्पिटल क्योंकि ये नहीं आ सकते, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, तो इसलिए हॉस्पिटल इनके पास पहुंचा। लेकिन ऑब्वियसली एक इनहिबिशन है, जैसा कि आपने अपनी बातों में ही बताया कि आमतौर पे इनके पास लोग जाते हैं इनको एज ए रिसर्च सब्जेक्ट की तरह मानकर। तो इसलिए और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल आता है वो रोल आता है हमारे एनजीओ का। और इन में जो बहुत पहल यहाँ पे की और जैसे आपने बताया बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा वो रहा आरोहण का। तो आरोहण से मैं अब यहाँ पे स्वागत करता हूँ मिसेस रानी पटेल जी का। मैम प्लीज आप हमारे बीच आके अपने विचार रखें और बताएं कि किस तरीके से ये स्टडी आपने इसमें हेल्प किया और क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे इसमें। Am I audible? Yes, ma'am, please. Thank you so much, Vivek ji and Abhishek for speaking and like presenting transgender community. मेरा शत कोटि कोटि नमन एम्स की पूरी टीम, राजीव मल्होत्रा सर और विवेक जी। सबसे पहले तो विवेक जी हमारे पास आए, जो उन्होंने कहा था हमने भी मार्जिनाइज्ड बच्चों के लिए काम शुरू किया था। तो विवेकानंद जी का जो था कि स्कूल कैन नॉट रीच टू द चाइल्ड एंड द स्कूल मस्ट रीच टू द चाइल्ड, वो ये आप लोगों का भी था। और हम लोग तो जैसे हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, हम लोगों की मतलब जो है कोई बहुत ज्यादा एंगेजमेंट की आइडेंटिटी नहीं है, हम कर रहे हैं तो इट इज हार्डली एनीथिंग। बट प्रोफेसर विवेक और राजीव मल्होत्रा सर जैसे हमारे देश के ही नहीं, मेरे साथ शायद ग्लोबली इन लोगों का जो है इसको रिकग्निशन है। एंड व्हेन they have come and they worked on this platform, जो इनका इनिशिएटिव है, आई थिंक सबसे पहले तो मैं कोई भी इस तरह का इनिशिएट करते हैं तो आई रिकमेंड देम फॉर उनकी हाईएस्ट रिकॉग्निशन इनको मिलनी चाहिए। बिकॉज ये स्लम के अंदर में हमारे जो वॉलंटियर्स जो आते हैं वो तक नहीं जाना चाहते हैं। वेयर मंगोल बिल्कुल छोटी सी एक मतलब जहाँ पर की कोई सैनिटेशन या नहीं तो फिर किसी चीज, वहाँ डॉक्टर विवेक जाकर हमारे बच्चों के साथ में नॉट ओनली इंटरेक्शन, दे ट्राई टू व्हाटएवर आई इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी डॉक्टर विवेक, आप वहाँ जाकर उनके साथ में टाइम स्पेंड किए डे लॉन्ग, और व्हाटएवर ही इज स्पीकिंग टुडे दैट इज लाइक आई थिंक वो उनके साथ रहकर जो समझ पाए और वो दिल से लिखा और इनकी तो अभी सिस्टम करने की कोशिश है, ये कुछ भी पर नहीं कर सब बैठे हुए हैं। बेटा आप लोग यदि मैं गलत कह रही हूँ तो फिर आप लोग करेक्ट कर सकते हो। तो ये सारों का मतलब जैसे प्लेटफॉर्म जो लोगों इनका हेल्थ हमेशा से ही रहा है। ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं जा सकते हैं, जो कि इनके पास में सिक्योरिटी है, बिल्कुल victims of money, whatever you can say, whatever abuses, I think बोलने के लिए अभी समय नहीं है। You will have to speak about it. कुछ हमेशा से आप करते हैं आपस में एक दूसरे की, but these kind of like highest quality I will say, I'm proud की एम्स, जो कि शायद एम्स दिल्ली का यदि बात किया जाए, even I am feeling I am at the top of the world having association with this thing. तो लोग आगे जो मेरे को समझ में आई है, but that is the beginning of the journey. और I am sure जो गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही हैं उसमें ये एक सब्सटैंशियल रोल दिखाएंगे, ये अपनी एक फीडबैक के थ्रू या कोई इनकी पॉलिसी मेकिंग में ये बहुत बड़ी काम आने वाली है, क्योंकि हेल्थ और जो साइकोलॉजिकल ये सपोर्ट दे रहे हैं, आई थिंक दैट इज पैरामाउंट। उस पर कोई
प्रोवाइड एंटायर उनकी ग्रोथ के लिए जो ये प्रक्रिया है इन टीम ने जो की है, डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर हाउ या डॉक्टर विवेक की टीम, मैं उनका सबका नाम लूंगी तो शायद बहुत समय लग जाएगा। तो इसको एक प्रॉपर अवेयरनेस की जरूरत है। इन्होंने किया है कर इतना टाइम लगा के इनकी जो मेन एनर्जी जो है उन्होंने इसमें लेकर इतना टाइम देकर इन्होंने किया है। हमारे देश में जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं पॉलिसीज हैं बहुत अच्छे बनते हैं, लोग जो है इन्वॉल्व भी होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जैसे आग लगा उसके बाद धीरे धीरे so now it is our government saying like states in various communities and sure it is going to get and what our that may be transgender, that may be women. So whatever we do, they should live with dignity. If we don't provide dignity, we don't give them a space of dignity, then I guess. So in case of dignity के लिए definitely I will speak few of the things like मैम मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क का इशू है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप अपना वीडियो ऑफ करें तो हो सकता है कि शायद आपकी आवाज ज्यादा बेहतर आ पाए, तो थोड़ा बैंडविड्थ मिल जाएगी हमें। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है बट बीच में बहुत टूट के आ रही है आवाज, तो उससे कुछ बातें जो आप कह रहे हैं वो कुछ समझ में आ पा रही है, कुछ बातें समझ नहीं आ पा रही है। Can you hear me? Yes, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके, नहीं आपकी इनकी आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज सुनाई दे रही है आपकी। हाँ जी, ठीक है। तो what I am trying to say is just a minute. So sorry for the inconvenience. So what I am trying to say is, are you able to hear me? Yes ma'am, perfectly ma'am, please. So what I am trying to say is कि यदि इस तरह की कोई भी like policies या कुछ इस तरह का जब कभी भी कोई मतलब इनिशिएटिव ली जाती है तो ये एक बहुत जोर से बड़ी फायर के तौर पर उसके बाद में एक एशिश में टर्न ना हो जाए। I would request through you to the government कि इन चीजों को प्रॉपरली रिकॉग्निशन मिले एंड अवेयरनेस, क्योंकि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के भी पॉलिसीज वगैरह रहे हैं बहुत बेहतरीन पॉलिसीज हैं और वो सारे जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लास्ट माइल जो है हमें नहीं मिलती है और वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर ही होकर के रह जाती है। और मैं जो हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि यदि इनके लिए हम उनकी ब्यूटी एंड वेलनेस स्किल प्रोग्राम्स में जैसे उनकी चॉइस की जो चीजें हैं, ड्रेस डिजाइनिंग है या नहीं तो फिर फैशन है या फ्रेंड हॉस्पिटैलिटी काइंड ऑफ ये, और डॉक्टर विवेक मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कहूंगी यदि इन बच्चों को साइकोलॉजिकली मे बी 10-15 बच्चों को भी यदि हम उनको ये जो उनका भय है कि हम लोगों के बीच नहीं जा सकते हैं और यदि हम जाएंगे तो फॉर श्योर हम एक्सप्लॉइटेड होंगे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड होंगे, जो हमारा मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, वो कॉन्फिडेंस यदि हम दिला पाते हैं तो आई एम श्योर
हमें थर्ड जेंडर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. They will live like either male or female. Thank you so much for giving me time to like speak and present. This is my. Recently we had like conferences in Delhi University. They had fabulous like time in Hayat Hotel Hayat. तो अभी धीरे धीरे आरोहण का प्रयास भी ये रह रहा है कि इनका वो जोन जो है मूव करने का वो बढ़ता जाए करके, और इस पर मैं एक पॉलिसी भी होनी चाहिए इनके रिजर्वेशंस के थ्रू कि भाई इनको जहां कहीं पर भी है डेफिनेटली इन्हें वो जॉब्स में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल मतलब हर चीज में करके, उनकी अपनी, और इन पर कोई दया नहीं करे, इनकी कैपेसिटी बिकॉज दे हैव लाइक बहुत स्ट्रेंथ है इनमें. जहां मैं हर वक्त में ये कहती हूँ कि एक काम को हमारे बच्चे जो है एक अकेला करता होगा तो ये 4 बच्चे करते हैं एक काम को, तो ये अकेला जो है 4 का काम कर लेता है. दिस इज माय एक्सपीरियंस विद दिस पीपल फॉर लास्ट 12 years. Yes, we have 12 years experience with TZ community. Definitely I would request Ram or Deepak if they are here, and even Shashi sir has experience, good experience of working 11 years as director. तो आप इनमें से किसी को पूछना चाहेंगे? इवन प्रिंसी इज आल्सो, ही इज गेटिंग रेडी टू स्पीक समथिंग. तो आप प्लीज आप जो है कैरी ऑन. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका. आप लोगों जैसे जो टॉर्च बियरर्स हैं हमारे समाज में, उन्हीं की वजह से हमारे समाज में जो कमियां हैं उनको हम दूर करने के लिए बहुत जो अपनी लड़ाई है उसको जारी रख पा रहे हैं. आप लोगों का बहुत धन्यवाद. आरोहण से हमारे जो बाकी साथी हैं वो भी प्लीज अपने विचार, अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस दौरान और जो आपके सजेशंस हैं कृपया हमसे शेयर करें. प्रिंसी मेरे ख्याल से ये बोन डेंसिटी जो टेस्ट है ये सारा ही हैज अंडरगोन ऑल दोस थिंग्स. डेफिनेटली प्रिंसी, आई थिंक यू कैन प्रेजेंट इट, योर एक्सपीरियंस एंड ऑल यू कैन शेयर विद अस. थैंक यू मैम सो मच. हाँ, तो मैं बिल्कुल एवरीबॉडी लिसन मी. हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं प्रिंसी जी. आप थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट करें, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं. आप कैमरे से थोड़ा सा दूर हटे हैं तो हम आपको देख पाएंगे. हाँ, अब हम आपको देख पा रहे हैं. बहुत बहुत बढ़िया. प्लीज. ओके, थैंक यू सो मच. तो जैसे कि रानी मैडम ने कहा कि बिल्कुल मैं उन्हीं की बात से शुरुआत करूंगी कि पॉलिसी बनती है सब चीज की, बट वही कागजी कार्रवाइयों में रहकर जो एक्चुअल पॉपुलेशंस को, जो टीजीस पॉपुलेशंस को, जो कि स्टेट लेवल पे है, बहुत लो लेवल पे है, ये भ्रांतियां कि टीजीस होते हैं ये बहुत पैसे वाले होते हैं या ऐसा होता है, नहीं, कोई पैसे वाले नहीं होता. पैसे वालों के घर में तो कभी टीजीस ही नहीं पैदा होते. कभी सुना ही नहीं होगा कि हाँ किसी नेता के घर में ट्रांस पैदा हुआ, ये किसी फिल्म इंडस्ट्री ट्रांस के, क्योंकि पैसा होता तो ये चीज छुपी जाती, उसमें बहुत पावर है. ये कहीं ना कहीं उजागर ही तभी हुई है जब वो ना एजुकेशनल से सक्षम है, ना पैसों से सक्षम है, और ना ही वो अपनी जो उसकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो भी नहीं उसको स्टे कर पा रहा. तो मतलब कहीं ना कहीं सोचना, अगर कोई भी काम को करना है तो बेसिक से. बिल्कुल सही कहा कि हार्मोनल्स जो हम ये ट्रीटमेंट लेते हैं और हार्मोन्स की इस टाइप में एक मेल्स बॉडी को कैसे फीमेल्स में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है हड्डियों का ढांचा डिसबैलेंस होगा और हड्डियां वीक होंगी. इसके अलावा प्रॉपर टाइम ना खाना, प्रॉपर डाइट ना लेना, फैमिली सपोर्ट कईयों के है कईयों के नहीं है, ठीक है, वर्क कुछ ऐसा है, तो अपना आप में हेल्थ बहुत ज्यादा इशू है कम्युनिटी को लेके. तो कहना का मतलब यही है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी चेकअप, किसी भी चीज को लेकर कर रहे हैं तो पूरा बेसिक से लेके एंड तक का रिजल्ट दीजिए. अगर उम्मीद जगा रहे हो तो उम्मीद को पूरा कीजिए, वरना उम्मीद जगा के जब उम्मीद पूरी नहीं होती ना तो वो बना बनाया विश्वास भी टूट जाता है. सच्चाई पे फिर जो हकीकत में करने वाले भी लोग हैं ना उन पे भी विश्वास नहीं होता, बिकॉज क्योंकि मेंटलिटी ऐसी बन जाती है यार, सिर्फ सपने दिखाते हैं, सपना दिखा के तोड़ देते हैं, और वो जो टूटा हुआ दिल होता है वो बहुत खतरनाक होता है. फिर हम यही बोलते हैं कम्युनिटी से, यही आते हैं यार प्लीज सपने मत दिखाओ,
कर दो ना, तो फिर करो, दिल से करो। तो वही मैडम जी का भी कहना और कम्युनिटीज का भी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास लेवल पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही हमारा क्वेश्चंस होते हैं कम्युनिटीज की, बहुत से ऐसे हैं कि, तो यही चीज मेरा इनसे ये कहना है, और यही सारी कम्युनिटीज का भी है कि अगर आप किसी को उम्मीद दे रहे हो, किसी को सपने दिखा रहे हो, तो उनको उन पे खरा भी करो। सब में टैलेंट है, सब है, अच्छे हैं, बट जैसे कि बात कर रहे रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन देखना बेचारे कह के नहीं, रिजर्वेशन रिजर्वेशन इक्वालिटी के लिए, कि हम 4-5 सीढ़ी नीचे है तो रिजर्वेशन दोगे तो हम उनके लेवल पे आएंगे। तो वो हमारा कोई वो नहीं है कि हमारे पे तरस खा की है इस चीज पे। अगर बात इक्वालिटी की, क्योंकि वो सीढ़ियां हमसे छीनी है समाज ने, इक्वली उन्होंने ही नहीं करा, पहले था, हर चीज में मान रखते थे हमारा किन्नरों का। हम तो शुरू से पूछते, बाद में ब्रिटिश आने के बाद इन सबको जो हटाया गया है, या इनको बेचारा पाप, या इनको ये सब चीज कह के, ये जो इनसे सीढ़ियां खींची है, ये जो इनको अनइक्वल बनाया है, ये बनाया है कि ये समाज में वो है, जो भी है, मतलब बोलते हैं आजकल तो अपना रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप बात करो तो मेंटेलिटी नहीं लोगों की, हम बात सिर्फ डॉक्यूमेंट की नहीं कर रही, बात हो रही है यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे जिनसे हम डेली फेस ऑफ करते हैं, वुमेन्स, फीमेल, अभी भी उनमें से बहुत से लोगों की मेंटेलिटी नहीं चेंज हुई इसकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? हेलो, हाँ जी प्रिंसेस जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं? हाँ जी प्लीज। ठीक है ठीक है प्रिंस, मैं अब ठीक है। दीपक जी से बोलूंगी, दीपिका से। दीपिका आरोहण ने जिनको एज अ बोर्ड मेंबर लिया है, दीपिका आई थिंक यस, आप थोड़ा सा हाईलाइट करिए, ये हमारे आरोहण के बोर्ड मेंबर भी हैं। शी इज लाइक, शी विल बी रिप्रेजेंटिंग मोर like experience whatever she her. okay, yes, thank you Rani ma'am. Hi, namaste, good afternoon. Myself Deepika, I am working with community since 2009, and I have 13-year experiences to work with community, and I become transgender leader for this particular community right now, and right now associated with Arohan, being a board member and right now handling this project where you have visited and Dr. Vivek have visited. I'm working there as director for this targeted intervention program. And yes, Princey के बाद से ही शुरू करते हैं. So when she was talking about the equality, so equality is a big word. एक शब्द है जिसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है. So जैसे रानी मैम ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि yes, अगर इतना सब कुछ हो जाएगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि थर्ड जेंडर बोलना है. मेल फीमेल की तरह नॉर्मली जैसे बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग रहते हैं वैसे आप रह सकते हैं, कुछ भी अलग से राइट्स के लिए आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड this was my dream actually, to understand what is the impact of self taking hormones in human body when in terms of the community I was talking about. And I was thinking because मैंने देखा है कि 40 ईयर का कोई ट्रांस है जो सेल्फ हार्मोन लेता है, उसके बॉडी पे अलग तरह से हार्मोन असर करते हैं. 20 ईयर का होता है तो अलग तरह से असर करते हैं. somebody who have HIV and taking हार्मोन थेरेपीज, जिसको हम HRT बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके बॉडी पे एक अलग ही इम्पैक्ट हो सकता है. और कभी-कभी वो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि मैंने कुछ देखा था, फिनेक्स करके एक टैबलेट है, उसका साइड इफेक्ट है विद दिस हार्मोन ट्रीटमेंट एंड ART. वो दोनों अलग अलग करके करते हैं तो ठीक रहेगा. एक साथ लेते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होगा बॉडी में, बहुत ज्यादा नहीं है बट है. और बोन डेंटिसिटी का प्रिंसी वाज टॉकिंग अबाउट, डॉक्टर विवेक वाज टॉकिंग अबाउट, एंड डॉक्टर अभिषेक यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट. ऑब्वियसली बोन डेंटिसिटी का प्रॉब्लम होगा बिकॉज हम मेडिसिन खा रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल्फ. इफ आई गो एंड टॉक टू द डॉक्टर्स, usually I have seen this, so many doctors are prescribing medicines to the community कि ये खाओगे तो चेंज हो जाएगा, but nobody is talking about कि ये खाने से आपके बॉडी में इम्पैक्ट भी होंगे. आप ये समझ लीजिए, सारे प्रोज एंड कॉन्स को अगर हम आज बताना शुरू करेंगे तो they will be able to take all the right decision, which happens with me. When I was taking hormone in 2014, doctor said that okay, this is the issue, जिसकी वजह से तुमको चेस्ट में हेवीनेस पेन फील होता है, ये चेस्ट में पेन हो रहा है एंड तुम थका हुआ फील करते हो, बॉडी थक जाती है.
और बहुत सारा मूड स्विंग्स होता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो काम के ऊपर. दे वर टॉकिंग टू मी ओनली. Then that day I have decided, no, I will not continue these hormones. I will skip these hormones. So this is my own personal experiences, and I want, some reports should come out from this study which can help our community to understand what is the pros and cons of all these hormone taking process. Because usually ये हो रहा है, मतलब काफी सालों से हो रहा है, लोगों ने सेल्फ भी लिया है. Now government of India and other private doctors are very supportive for all these things, but लोग उसके बारे में बता नहीं रहे हैं. और जब हम हार्मोन्स लेना है तो हमको क्या खाना है, क्या डाइट लेना है, अल्कोहल को नहीं लेना है ना, हमको स्मोक नहीं करना है, ये सब बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही कम लोग बता रहे हैं. दिस प्रैक्टिस, आई एम ऑनेस्टली सेइंग, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस बिकॉज़ आई हैव लार्जर एक्सपीरियंस ऑफ दिस कम्युनिटी एंड entire India. I know all these things. So South में Kerala and some other states जहाँ पर इस बारे में बताया जाता है. I have seen West Bengal जहाँ पर इस बारे में बताया जाता है कि आप ये खाएंगे तो इसके ये साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो आप सोच के खाइए. और अगर आप खा रहे हैं तो साथ में ये वाली मेडिसिन और ले लीजिए. सो फॉर एग्जांपल विटामिन सी का प्रॉब्लम हो सकता है तो आप विटामिन सी का टैबलेट ले लीजिए, जिंक. तो इस तरह से वो लोग बताते हैं, और जिसके वजह से बॉडी को मतलब एक लेवल पे मेंटेन करना बड़ा आसान हो जाता है. कॉमन मेल और फीमेल के तरह से फिर वो रख सकते हैं. और nobody is talking about कि एक आज एज के बाद 60 ईयर के बाद आप लोग अकेले हो सकते हैं शायद, या 50 इयर्स के बाद, और आपके बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम होगा, वीक होंगे तो आपके ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे. Nobody is talking about all these things. So I would suggest Dr. Abhishek, if this kind of suggestions will come out from this report or study, that will help us. And yes, the important part, being a community, being an organization, I would recommend and suggest, credit should go to the community, to the organization, to the aims, to the people, those who are involved in all these process. That time, personally, I was not involved in this, but being an organization, we were involved. So we want that, one single line or one name in that particular research report, if it will come out from this, report, and within the report, if the, this process will allow us or you to mention the name of all these things, this will really, really, really great and helpful for all of us. Thank you, Deepika ji. Yes, this is all yours only. And one thing definitely I would like to add, पहले आप लोगों का नाम है, बाद में हम लोगों का ये है. जो भी ये एफर्ट्स लिए जा रहे हैं आप लोगों की डिग्निटी के लिए और आप लोगों को लाइमलाइट में लेके आने के लिए ही कर रहे हैं. ये बात अलग है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दे डोंट पार्टिसिपेट प्रोएक्टिवली, क्योंकि इन लोगों की हालत ठीक उसी तरह से है जैसे अभी दीपिका जी ने कहा है कि हम ट्रस्ट नहीं करते हैं लोगों को. तो शायद हमें इनको ट्रस्ट दिलाने के लिए कि हम इनके साथ में खड़े हैं और इनके लिए खड़े हैं करके हमें और एफर्ट्स डालने की जरूरत है. ये सब आप लोगों का ही है. ठीक है. Yeah, actually this is the thing. People are really scared from the society that we have they are noticed. not believing in that. And ये विवेक जी, मैं एक और चीज, यहाँ डॉक्टर राजेश भी हैं जिनसे मैं, डॉक्टर विवेक भी हैं, और आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ. इन सब में जो मैं ये इनके साथ 10-11 साल 12 साल के काम में एक चीज मैंने देखा, इनके मूड स्विंग्स, that is because of the split personality they are maintaining. Maybe that causes lot of like stress and all, so they cannot control their mood swings. So most of the time they are into quarrels, fights, even go beyond their like any imagination, I think. तो इस पर थोड़ा सा आप लोग जरूर हमें हेल्प करिए कि ये किस तरह से काउंसलिंग, अगेन आई विल से, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है, बट डेफिनेटली आई सीक सपोर्ट फॉर दिस, क्योंकि ये इतने अच्छे अच्छे बच्चे, आई विल नॉट टेक द नेम, बट थोड़ी सी छोटी छोटी चीजों के लिए वो आपस में लड़ लेते हैं, इतना ज्यादा लड़ लेते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं. वो डिप्रेशन दैट लेड्स टू लाइक वो अल्कोहलिक हो जाते हैं, ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं. एंड प्लीज सेव दिस चिल्ड्रन फ्रॉम दैट.
They are highly intellect, valuable, energetic, and they also want to live a life like us. Thank you so much. राम या कोई आप लोग कौन बात करोगे बेटा? शशि सर, would you like to speak? Yes. सर नमस्कार, आवाज आ रही है हमारी आपसे? यस, नमस्कार नमस्कार। मैं भी इनके साथ में एक बार था, डॉक्टर विवेक सर के साथ में। इन्होंने विटामिन सी के लिए बड़ा अच्छा इनको बताया कि सबने पूछा और कहा कि कितना इम्पोर्टेंट है। शायद बहुतों को भी नहीं पता होगा, जनरल पब्लिक को भी, कि कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। और अगर एम्स हमारे पास आके ये सारी चीजें कह रहे हैं तो मानसिक का भी अगर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए तो वो बेहतर साबित होगा। और एम्स अगर हमारे पास या अरुण के पास या कम्युनिटी के पास जा रहा है तो इन बच्चों के लिए तो कॉन्फिडेंस का बूम ही होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है सर। थैंक यू सर। Yes. राम यस मैम, आवाज आ रही है ना? मैं चाहूंगी राम, विनय, आप लोग भी अपना कुछ शेयर करो बेटा, so that राम एज ए प्रोग्राम मैनेजर, आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग राम प्रोग्राम मैनेजर रहे हैं। और राम, आपका फेस नहीं दिखाई पड़ रहा, आप लोगों का सुंदर फेस दिखाई पड़ना चाहिए। अब दिखाई दे रहे हैं राम, हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा फेस। तो जब 2018 में जब बोन की टेस्टिंग की जब शुरुआत हुई थी, थोड़ा मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। उस वक्त में जो है हम लोग को ये लगा था कि हमें एक टेस्ट क्यों कराना चाहिए या फिर ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। कमिटी भी इस चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर डॉक्टर विवेक सर से हमारी बात हुई, उनसे मीटिंग हुई और वो खुद हमारे सेंटर में आए। लोगों को उन्होंने समझाया कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और क्योंकि कम्युनिटी क्या करती है कि जब एक एज में आती है, जब उनको अपने आप को समझ में आता है कि हम एक अपने आप को एक महिला या ट्रांस हैं, तो वो अलग अलग से जो है हार्मोन लेना शुरू कर देती है, जिससे कि एक एज लेवल आने के बाद में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाता है उनकी हड्डियों को लेकर, या फिर और बहुत सारी चीजें होती है जो उनको हो जाता है। उसके बाद में फिर हमारा कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। तो जैसे ही सैंपल निकाला गया तो उस वक्त बहुत लोग घबराए हुए थे उस टाइम पे कि नहीं, हम ऐसे कैसे अपना सैंपल देंगे। लेकिन जब सैंपल निकला और उसके बाद में फिर उनकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद फिर जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स थे उनको हम लोग जो है एम्स हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे उनका जो है बोन की हड्डियों की जांच की गई। तो उनके लिए भी बहुत नया था कि अगर वो कहीं प्राइवेट जगह से कराते या कहीं अलग जगह से कराते तो वहाँ पे जो है बहुत खर्चा आ जाता, उनका 5-10 हज़ार तक खर्चा आ जाता वहाँ पे। और उनको जानकारी भी नहीं थी कि हमें ये सब चीज़ें कराना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एम्स के स्टाफ और बाकी डॉक्टर विवेक सर ने बहुत अच्छा कॉपरेट करा हमारे साथ में और उनको एक विश्वास दिलाया कि नहीं, हम लोग अलग नहीं है, हम लोग भी सोसाइटी का पार्ट हैं। और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद में प्रॉपर तरीके से सर ने जो है हमें गाइड किया कि आपको जो है, आप में इतनी विटामिन डी की कमियां हैं और आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डी जो है बोन जो है वो सही रहे, कोई खराबी ना आए, इसके लिए आप इसी तरीके की नशा ना करें। क्योंकि कम्युनिटी जो है अधिकतर कम्युनिटी नशा करती है, नशा भी अलग अलग टाइप से भी करते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर वे में समझाया। इसके लिए हमने एक मीटिंग भी रखी थी, वर्चुअल में भी हमने बात करा, जिसमें बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स थे और हमें नशे के बारे में जानकारी दी गई कि नशा करने से हमारी हड्डियों पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो और अभी भी जो है हमारा कांटेक्ट करते हैं। तो थैंक यू का और मैम का, जिन्होंने जो है हमारे समुदाय के लोगों के लिए जो है एक नई पैरवी करी और उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए कदम उठाए। धन्यवाद। आपका अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी भावनाएं शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय कम है हमारे पास, इसलिए मैं अब और शायद लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर ना कर पाऊँ। बट अब आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि तेरे दामन में कांटे बहुत हैं, फूल चुनना कहाँ मना है। गमों से लबरेज भी है तो मुस्कुराना कहाँ मना है। माना कि अंधेरा बहुत घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो मैं जानता हूँ आप लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद 2014 में आप लोगों को एक थर्ड जेंडर की एटलीस्ट एक पहचान मिली।
जो पहले पहचान नहीं थी वो एक पहचान मिली। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, मैं जानता हूँ आप में भी एक अविश्वास है, समाज में एक्सेप्टेंस आने में बहुत समय लगेगा, और सिर्फ हेल्थ नहीं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करना है। हम हर चीज पे काम नहीं कर सकते। हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पे और विज्ञान प्रसार के साथ मिलकर जो कर रहे हैं, और जो आपके साथ स्टडी यहाँ पे एम्स ने की है, हेल्थ के एस्पेक्ट पे काम किया जा सकता है। और डॉक्टर विवेक और उनकी टीम आपके साथ एक बहुत अच्छा काम इस समय कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने कहा कि ये जो स्टडी हुई है इसके आउटकम्स जो हैं वो जल्दी ही मतलब डॉक्टर विवेक उसको पब्लिश करने ही वाले होंगे। मगर उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पब्लिश करें सिर्फ जर्नल में ना करें, बल्कि वहां से जो आउटकम्स आए उसको एक साधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर में एक पॉपुलर आर्टिकल के फॉर्म में भी छापा जाए, ताकि आम जनता और ये हमारे जो किन्नर भाई हैं और बहनें हैं वो भी उसको समझ सके, और जो उनके लिए वहाँ पे राय देना चाहते हैं वो उन तक बात पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और हाँ जी, तो डॉक्टर विवेक, हाँ जी मैम, प्लीज मैम, प्लीज आपके बिहाफ में ये रिक्वेस्ट मेरी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है इनसे है कि काम करके हम ही नहीं इनिशिएट करें, उनको जो है डॉक्टर विवेक या डॉक्टर जो प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा हैं, तो राजेश मल्होत्रा हैं, इन लोग सारे का इस ग्रेट वर्क को आई थिंक ये रिकॉग्नाइज करनी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के लिए इन्होंने जो इनिशिएटिव ली है दैट इज रियली लाइक, मैं उसको कोई वर्ड जो है इसमें नहीं बांधना चाहती हूँ। और मेरा अगेन मैं कहूँगी कोटि कोटि नमन हमारे देश के, ये रियल रत्न है ये, इनकी नॉलेज, इनको कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये इस काम को करें करके, लेकिन इनका जो कंसर्न है इसमें आई एम श्योर, और प्लीज साइकोलॉजिकल इनके इश्यूज को जो है प्लीज ध्यान में रखिए। एंड थैंक यू सर, सॉरी मैं आपका भी बात बोल दी हूँ डॉक्टर विवेक। डॉक्टर विवेक आप म्यूट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप बड़ी बहन भी हैं, आप मार्गदर्शक भी हैं, आप मेंटोर भी हैं। शशि जी, राम प्रकाश जी, दीपिका जी को सुन करके आज बहुत सुंदर लगा, और बहुत बहुत बधाई कि आप बोर्ड मेंबर हैं। और डॉक्टर अभिषेक और आप सभी को डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर भावुक सर की बिहाफ पे मैं आप लोगों को एक कमिट करना चाहता हूं कि आज जो 2-3 चीजें ध्यान में आई हैं कि हमारा वन वे संवाद नहीं होना चाहिए, केवल कि मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। हमने पहले भी किया है डायलॉग कि हम केवल ऐसा नहीं कि हमारा जो पर्पस है वो केवल आपको केवल एक प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के रूप में लेना नहीं, हमने अगर आपको एज ए फैमिली की यूनिट माना है तो हमारे पास जो भी कुछ बेस्ट ऑफर करने के लिए जिस कैपेसिटी में भी जब तक रहेगा हम हमेशा बराबर आपको उस तरीके से सहयोग करते रहेंगे। और सिमिलर फैशन में हमारी भी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आपको हम एक बहुत लघुतम कण बन करके, छोटी एंटिटी बन करके आपको ह्यूमन रिसोर्स के ग्राउंड पे आपको एक सबसे उचित स्थान यदि जीवन में मिल जाए, उसके बाद आप अपने आप एक्सेल करना शुरू कर सकते हैं। मुझे जो आज एक बहुत अच्छी चीज पता चली रानी मैडम से, एक तो मुझे, बल्कि मैं इसको एक अपने लिए आदेश मान के चलता हूँ कि स्ट्रेस और मूड स्विंग्स के ऊपर, हालांकि पहले भी कह चुकी थी मुझसे, पर इसको मैंने कभी नोट नहीं किया था। आगे मैं इसको एक मिशन मोड में अपने डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को और वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ करके इसको एक परियोजना का शेप दे करके कैसे केवल इसको मोनोथेमिक बना करके हम काम करें, इसके ऊपर निश्चित रूप से काम करेंगे। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड्स फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, मैं अश्योर कर सकता हूं ऐसा। और दूसरा जो अभिषेक जी आपने भी कहा, दीपिका जी, राम जी, शशि सहाय जी और सभी लोगों ने कहा, हम सभी लोगों को माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो शब्द हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस प्रकार से हम सभी अपना अपना हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट आवर माइट, हम अपना अपना हाथ लगा दें ताकि कभी जीवन में जब कभी इतिहास लिखा जाए तो उस गिलहरी की तरह हमारा भी नाम आए कि भले हमारी चोंच में या चिड़िया की चोंच में पानी भले कम है, परंतु जब प्रयास की बात आए तो हम जरूर कहें कि हाँ, हम भी वहां पर थे, हमने भी अपना योगदान दिया। ऐसी बातों के साथ में मैं एम्स की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोफेसर मल्होत्रा, डॉक्टर भावुक सर
और सभी एक एक आरोग्य कर्मी, एक एक स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो जो आदेश आज हमें मिले हैं हम उनको एक मैंडेट के रूप में आगे करेंगे, और जो अभी तक का प्रयास रहा, जो अभी तक आपका साथ रहा, उसके लिए हृदय की सीमाओं से हम अनुग्रहित हैं और आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ में विज्ञान प्रसार की भी टीम का, निधि मैडम का, डॉक्टर अनुराधा का, अभिषेक जी, आप सभी का भी और सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अभिषेक जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजों को आखिरी में समराइज किया, और जो इस पूरे डिस्कशन से जो बातें निकल के आई उसकी आपकी तरफ से जो आश्वासन मिला है उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन, दीपिका जी, प्रिंसी जी, सभी संतुष्ट भी होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब कभी किसी प्लेटफॉर्म पर हम दोबारा मिलें तो हमारा ये इंटरेक्शन और बेहतर और फ्रूटफुल हो। आप सबका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक, आरोहण की पूरी टीम और सारे ही बाकी जो किन्नर समाज के भाई बहन हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ अभिनव सिंह जी से कि वो अगले सेशन को संभालें। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. On behalf of Mr. Abhinav Singh, I am Ms. Sheetal. I'll be coordinating the third session. So, as part of the third technology, we'll get to know more about eco-friendly utilization of hazardous pine needle for social benefits. As pine needles cause a major threat to the environment, biodiversity, and local economy in the Himalayan region due to their non-biodegradability and highly inflammable nature. So, by utilizing this property of pine needles, an initiative was undertaken wherein these pine needles have been converted into briquettes and are being used as a source of fuel. So, as part of this technology, I like to invite Dr. Aarti Kashyap, who is technology developer. She is a associate professor at IIT Mandi, Himachal Pradesh. She is passionate to serve the society, particularly through educational activities and technological intervention to uplift the hilly livelihood. Over to you, Dr. Aarti. Thank you very much for the kind introduction, and I'm very pleased and feel privileged to be here today. बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी टेक न्यूज़ एट 75 की टीम को, विज्ञान प्रसार की टीम को, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी DST को, जिन्होंने who trusted me when I proposed this idea to them and they funded me. Because थोड़ी फंडिंग तो चाहिए थी, अदरवाइज रिसर्च नहीं हो सकती थी. So I will just explain that how I got started into it and where we are right now. Lot of things have been done, but a lot is need to be done. So we are somewhere in the middle of it, but yes, partial success has been achieved, and that's what I will share. Just to begin with, what is the reason behind looking into this is in recent years, forest fires has become really a big menace in whole Himalayan belt. Of course, it's even a global phenomena. Reasons are different at different locations, but Himalayan belt में तो बहुत ज़्यादा है. You just Google forest fires in Himachal, and the first news which will pop up today is that in the month of April there were 645 forest fires in Himachal. Only in the month of April, and around 5,000 hectares of the area was under this effect. So it's a big menace, and the sorry part of the story is that it's not only that we are destroying nature, biodiversity. Sometimes even there is a loss of human life, and of course the cattle also, because you never know that where it would reach. And in fact, last 2-3 years we have seen at least few forest officers getting burnt alive. This is very painful, very painful to see that that this much damage to human life and biodiversity and natural resources and to our forests. Forests are our lungs, right? We need them. Right now, I think especially in pandemic, Himachal was just crowded by the people who wanted to have fresh air. So we all know the importance of Himalayan forests, right? So with this, when I joined IIT Mandi in 2011, so I had this desire that I wanted to do something which is, where I can give my input.
We shortlisted few problems we wanted to work upon, and we are working upon them. But this is one thing which was like standing out that this needs to be solved. So we just thought about it, and I spent a lot of time just researching on the issues related to the forest fires, why it is happening, how it is happening, what can be done, what has been done, or things like that. And unfortunately, what I realized was everybody knew the cause is dry pine needles. So dry pine needles is basically pine ki pattiyan hi hai, but they are in the needle shapes, and they fall on ground in the month of starting from mid-March, depending on the heat, April, May, June, until the rain starts. And most of the time, sometimes carelessness, sometimes deliberate. A human being is responsible for causing these forest fires. Most of the time, it is carelessness, and many of the time, it is deliberate also, because that's a quick solution to get rid of this. The reason is that there are misconceptions. Community believes कि pine अगर pine needle का fall होगा और उसको जलाएंगे नहीं तो घास अच्छी नहीं आएगी. The reason is that it's not that कि घास इसलिए नहीं आ रही है कि pine needle वो है. Pine needle hinders the flow of air. So उसके नीचे कुछ भी नहीं होएगा, right? So but it's not necessary कि वो आग लगाने से जाएगी. So what we thought was that pine needle पे की वजह से आग लगती है, तो pine needle is a biomass. People must have done something out of it. Right? We are not the first person to look at this problem. When we realized that yes, people had done a lot of things and there were partial successes, but none of the solution is like working anywhere, and the problem remained the same. When we talked to forest officials, they said that they get the budget in the fire season. They call it fire season. So fire season budget is there for having basically a sort of dispose of these pine, which is done by controlled burning. Again, a bad thing. So when we looked into the various solutions, we realized that one of the solution was that you can extract a chemical called lignin out of it, but that is out of fashion because demand of lignin is not that much now. Then people try to make even the board or making pulp and then board. That was not successful because the moisture is very hard to remove and it catches moisture again. So what we realized was that the best thing to do with the dry pine needle is to burn them. Okay, but burn them in a way that is a better solution. And world is energy hungry, and fuel is always in demand. So with this thought, we thought that we have to go towards actually making some kind of fuel out of it. Again, then we researched that what has been done. Maybe people have tried to make, but yes, people had tried to make by mixing it with some adhesives, making some sort of briquettes out of it, or mixing with even cow dung. Various things had been done, but none of them was successful for various reasons, which I am not discussing right now. So our idea was that, okay, just let's take pine needles and let's try to understand its chemical and physical nature and see what we can do with it. Okay, that's what we wanted. And in this whole process of deliberations, this idea came to us that, it has something to do because the way you make biofuel is basically, it's mainly compression. Okay, in briquetting, all you do is you compress the biomass. So what we thought was that it is when you are compressing it, it's not binding properly. So there must be reason that it's not doing. And immediately we got into this thing that the shape is a problem. And then we, coming from the science background, we just wanted to play around with the particle size if you are just trying to make something. So we actually manually chopped it, and we did we hired labor and just manually chopped it and applied various compressions, and then also looked into the various other physical conditions like moisture content and things like that. And we were very, very happy when we could make a very, very nice, clean pellets and briquettes out of this, of various sizes. Once we had that, and we were extremely happy that, okay, we could find a solution that how to make briquettes out of it. But then by the time the enthusiasm was so much, we thought that we cannot just let it happen in the lab only. We have to take it to people. So we went to government, HP government, and I met very good officers in HP government. I would like to name typically Mr. Satpal Dhimanji, Joint Secretary at that time in the forest. And they understood that there is a lot of potential in it. And one nice suggestion I got from one of my senior colleagues is that when you go to government, go with a complete solution, and it's easier for them to adapt that. I followed it very religiously, and we proposed a whole model to HP government that this is how you can implement a scheme where people will be, you can actually raise social entrepreneurs, do some hand holding, and this is how this whole thing can work. So we proposed a model, and I'm very happy to share that government adopted it as such as a policy in the forest department. So 2018, I guess, the policy was implemented,
and government actually announced that the subsidy will be given, handholding will be done, and the process started. 2009, it was towards the end of 2018, 2019, we could set up at least a couple of units, commercial units, with the help of villagers, and those units are now running. And then COVID happened, so 2020 and 21, nothing happened. But this year, again, the momentum is very good. Many more units are now set up, at least 7 or 8 units are running in Himachal. And J&K has got attention of the project. So in J&K also, I'm very happy to share here that J&K, I think within probably by next fire season, I also call it fire season, although I don't like it saying fire season, but I'm hoping that, there will be few more units over there. The outcome of this has been, it's a very challenging project in terms of technology also, because this biomass is not like other biomass. Even running the unit requires a lot of skill, okay? And that's the challenge my entrepreneurs are actually facing. And then Himachal being Himachal, you do not have lots of expertise in terms of mechanics for the machine, or whenever there is a breakdown, we have to call people from Faridabad, from where we have bought the machines. So there are challenges, but nice thing is that the linkage is now very clear. People have shown trust, units are running, and nobody is complaining that we don't want to do it. Because I would say that the reason is that, so one reason is, of course, we are saving our forest, and we are saving the biodiversity, we are helping the nature, we are saving environment. But in this whole process, we are also generating revenue by producing a fuel. And fuel is, we have no problem in selling the fuel anywhere. So this is all we have done. And the best part is that the collaboration with the government, and to get this R&D, actually, as a researcher, we are very happy when we get good results in the lab. But taking it to society requires a very different level of effort. And I feel very pleased that, okay, yes, there is a partial success. Why I call it partial success is that my dream is that in every fire-prone districts, which are like 5 or 6 in Himachal, there should be at least 10 units over there. Okay, so that whole region is now taken care of. Another problem is that the problem I would like to mention is the collection is a very big problem. So we are evolving the model for that also. And another nice thing is that some NGOs, some private companies, some individuals, even the qualified ones, and even not so qualified ones, everybody is reaching out, and people are getting to know that this is a very viable solution. So I would like to conclude by saying that I started with the thought that let's try that, can we have something. But today, what gives me satisfaction is that I have a full model, working model, and that's a good part. And finally, I would say that मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता चला गया, फिर कारवां अभी और बढ़ेगा, that I'm sure of. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. So, as you explained, I have few doubts about it. So, I would like to know, like, as you said, the kind of collection technique is, you are still working on the type of collection, like collection technique. So, what kind of collection technique are you using currently? See, it's not a collection technique actually, because simply, the normal rakes are used right now. The problem is that it's a very loose biomass, so it has to be carried out to the site, right? And so collection itself is very treacherous, and then carrying it over to the site is also. So there are certain things which people tried, but the problem is that if there is a road nearby, then you can actually have a vehicle also. But there are higher reaches where you have to do it by foot. So that is one thing, and I'm hoping that if we can do some sort of either chopping or some pre-processing before we actually transport it, that would help. But that we are thinking about. There are few things in mind, but right now it's not like implemented. Okay. And for the operation of the units, like you said, the 7 units have been implemented as of now, and a lot of skill set is required for operation of those units. So what kind of skill set are required, or do you provide training to those people, or how does it function? Yes. Yes. So initially, when 2019, we conducted workshops, and we invited people, all pradhans of nearby villages, forest people. So we invited all sort of people, whosoever was interested. We advertised it quite nicely. But 2022, we did not do a workshop so far. But those who are actually setting up, we are
completely with them. So day-to-day problems, they maybe the next Lakshmi is going to speak next, and she will tell. So we are doing lots of hand-holding, whatever we can do. But at the same time, then we are connecting them to right kind of people wherever they are stuck up. So that way we are doing hand-holding. But yes, you are right that I think next year probably, because this was after COVID, the first year the operation restarted. I think we will do mass level workshops again. Okay. That will be really helpful for the people who are interested to know more about this technology or work at these manufacturing units. Yes. Or operational units, to be specific. And another thing was like, what is the efficiency of fine needle briquettes compared to other conventional fuel used as of now? That's a very nice question. So, the fuel is known by its calorific value, that how good it burns, right? Yeah. So, when it comes to briquettes of the biomass, sawdust biomass briquettes are quite, they are in circulation. So it is, and then coal, of course, is there. Its calorific value is somewhere around nearing 6,000, 5,700, 5,800, depending upon the moisture. That changes a little bit. But it is a very it's better than sawdust, much better than sawdust, and it is quite good in terms of calorific value. So it's a good fuel, and the burning rate is also slow, so it burns nicely. So the basically like when these briquettes are prepared, so it's just based on the compression and the particle size, no binder or No anything else is added. Yes. Okay, so this increases its efficiency compared to what was tested previously by Yes. other people. Yes. Okay. And while using this briquettes, are harmful gases emitted? Like, does it cause any health hazards or No. it doesn't? So we have done the CHNS analysis. So any fuel. So for example, when this uncontrolled burning is happening, it is at one point of time, it is smoke is there, and of course there is a release of harmful gases. But if the fuel efficiency is good, then you actually reduce the sort of bad effect of it. Of course, it's still burning, but it's burning is efficiently. Especially again here, you touched upon a nice question. There is one initiative by another company called Himalayan Bucket Stove. They have come up with a smokeless stove, and they are using it in the whole Leh region, and they are buying our fuel. And our fuel with their stuff is excellent composition, I would say. All right. Thank you so much, ma'am. So now I'd like to invite Miss Lakshmi, who is founder of Lakshya, to highlight these like the benefits she has experienced of this technology. Thank you, Sheetal, and thank you, Aarti. And I must say, without ISTI and this incredible work that has been done by ISTI and Aarti and team, we wouldn't be here, So it's really our journey began while, I'll take 1 minute to talk about ourselves. We started, in fact, during COVID with the intention of enabling migrant labor who refused to go back to their homes and stick it out here. And we said, let's see how we can generate employment for them. And found that they had skills, and we commissioned work for them in the area of making masks, putting it back. So we generated help them, keep their heads as well as those of their family off the ground. So that's where really we started, and we expanded to support a group in Punjab as well. But yeah, I think during the COVID times, that confidence really got Aarti and us together, where we actually watched the program to India. Sorry, ma'am, I'd like to interrupt here. Your voice is a bit low. I mean, it's not clearly audible. All right, is it now? And also, Sheetal, there is noise from your background. You have to tell people to be, little these things, because you are in Vigyan Prasar's these things, and there are background noise which are coming. Yeah, I'm so sorry for that. I'll try and be louder. All right, so it's really we saw this incredible work that was being done as an initiative to really tackle this big problem of forest fires, and we were very, very impressed by the technology and the invention that Aarti and team put together.
And we actually went and met them, in October last year, and we said, okay, how can we actually join hands? And we were not from this background, but we are people who are very, very passionate and committed to doing something which can make a difference to the ecology and restore the balance, really. So that was our prime intention. And so we just jumped right in April of this year. We relocated to Mandi in Himachal. And my husband and I, in fact, we are the team at Lakshya at the moment. And so what we have done is taken forward the incredible work done by Aarti by putting together a machine that is, converting biomass, which is the pine needle-based biomass, into briquettes. So we said that let's find a way to actually run it and see, treat it like a pilot, use the next 6 months as a time for us to put, proper systems in place, understand the processes, because life before COVID is quite different from life after COVID, right? So for us, it's been a huge learning curve, and I think a brilliant time wherein we have understood the lay of the land, of course, not too far, but close around IIT Command and the other unit at Punnu. And so, we're really trying to understand which are the pine dense areas, which is the places where the raw materials are in abundance, a process which will enable us to, bring the pine over to the machines. And then, of course, the entire process of production, which I have a brief little snippet which I will share with you on how this entire thing works. I cannot take you to the unit right now only because it's raining and the machines are not in a position to produce at this point of time. So we have a little clip to share. So, to take Aarti's point forward, that while the government has, put forward, the DFO, the Forest Department had put the initiative forward of, helping in collecting the pine. This year, what we were able to find out is that there is a the Japan International Cooperation Agency is called JICA. So with the help of JICA and the Forest Department, we were able to tap into, various self-help groups which they created. So that's how a collection system has, a mini collection system got formed this year. And we were able to span about 6 or 7 villages around the IIT Mandi premise, the command premise. And we have managed to collect about 18,000 kilos of pine over a span of about 45 days, because it took us a little time to try and figure out the entire logistics. So we got that together and we collected it. And, the nice thing is that while, what was really wonderful is that the women, is the power of women, really, I call it the power of women, that they came forward and said that, okay, we will collect. And it might be pine in the lower lying regions, but it could be even at the higher end. So they took a lot of pride in the fact that they could be part of a movement such as this. So some level of employment was generated. In fact, there were about 2 ladies, whom we were able to touch in the course of about 45 days. And so we were able to pay them a little money by way of, for their efforts, as in 3 rupees per kilo. We said, okay, earlier it was 2, it's not valid now because inflation is at a high. So on our own, we said, what can we do to make it meaningful for them so that they want to do it in a sustained manner? So they were happy with the 3 rupees per kilo. So we were able to, collect about 18,000, like I said, over here and more in the other unit. And generate that employment. So that was good. And in fact, they were quite happy. In fact, I continue to receive calls from ladies to say that, shall we collect more? And then we had to say, no, not right now, because, the monsoons are approaching. So, we when we collect and keep, the moisture will not permit the production of a high quality. So that was one thing. But I think the next 6 months for us, in fact, this 6 months from May to December for us is going to be a period where we're actually going to be setting up processes which will enable us to have a very sharpened, a whole methodology and a whole system, right from collection to storage to the production of it
Also, the market relevance, like Aarti was mentioning, the Himalayan rocket fuels. So there are people in Manali, there are people in Leh, there are people in the industry level. So, the impact happens at various levels. At the industry level, it has huge relevance because today I understand that even from a governor's point of view, there is a requirement for using alternative fuel for as an input instead of coal. So there is a clear market out there, as well as the non-industry, which would be the points like Leh and Manali, where from November to March it's going to be extremely difficult for them to sustain without heating. But no better alternative than a pine-based briquette. And of course, while pine has its seasonality, what we discovered is that there's so much of biomass available. So right from sawdust to lantana, there is a lot that we can actually convert and use in a very effective manner. And the nice thing that IIT and team have done is that they have actually utilized the year 2018-19 to test what is the calorific value of different biomaterials, the biomass materials. So we can confidently go out into the market and say that, okay, we have products which will be, carbon efficient, which will be far more efficient in terms of the kind of product that you're getting, and also at a price point which will be far more effective than the fast depleting coal that we see in the marketplace. So we have just made a small start, and let me show you a little demo of the unit at command. Give me a moment, please. In the meantime, can I ask Dr. Kashyap, this the activity, is it a part of the current WTP? No, it's not part of WTP. No. Yeah, because I see a lot of the women are there, the technology transfer is there, skill development is there. So I thought this may be a part of the WTP. And the second point, what Mrs. Datta Gupta has told, it is important to develop the scientific rationale and communicate to the community where to stop. Because generally, all the human being, all of us at a societal level is guided by the trait called greed. And the grid may take more amount of the the more amount of the natural resources, in the context of the sustainable development, it's important to know, we must know where to stop, and there is a scientific rationale behind that. So probably I don't know if you have developed that, Dr. Kashyap, because it's important in which season how much really should be the maximum limit you can harvest, because definitely the forest department will also have that the mechanisms, the rationale. So it is important to as a part of the sustainable livelihood to develop that also. Sure, yeah, you're right. So allow me to share the video. Please let me know if it's all good. Yeah. Are you able to see this? Yes, yes. Yeah, okay. So this is the output of briquettes. And that's a whole stack of pine, which actually first goes through a process of crushing. So it gets threshed and then is put through this mechanical process by which it is taken to, it is condensed and it's fed into this via this feed, and down here is where the output, the pine goes down and it's condensed and pushed out with punches. Yeah. Using compression. Yeah. I had another video to share.
This is pure pine. Ma'am, it's not visible. It's not visible? No. Oh, okay. I think you have turned off your Is it? screen share option. Oh, okay. Sorry about that. Okay. Okay, now it should be. Visible now? What you see on one corner is a threshing machine where the pine needles are first threshed and then it is fed into this conveyor. Yeah. Yeah, so that's from me. Sorry, just give me a moment. Yes. Can I speak something? Yes, please. Yeah. Lakshmi, I think Sheetal is here. Again, I will recommend they are doing such a fantastic job. And I think this is the demand of the time and it should not get cornered. They should be recognized properly. And I think we are there to execute in different locations. Please speak for them to Ministry of Science and Technology because hats off to you again. And this is a wonderful initiative because we all need to protect our Mother Earth, right? Yeah. Yes. Yeah, ma'am, for the same reason we are here to highlight such grassroots level technology because this is like need of an hour. And Even all after better, I have noticed even after so many seminars, so many conferences, most of the time we are in the documents only. So definitely I would ask you on behalf of Lakshmi that please, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही simple methodology है इनकी, बहुत ही simple है. I think everywhere it can be used in cremation grounds, it can be used in tribal locations where gas is not available. This gas is a big talk because people are not able to afford that. I think definitely this will be a substantial support for them if we could get the Lakshmi. I am from Arohan. I will keep in touch. Please share the numbers and great. Certainly. Thank you so much. Thank you, Aarti. Thank you. Thank you, ma'am. Since we are running short of time, I'd like to invite Draupadi Devi, who is beneficiary, and she is a representative member of Bharti Self-Help Group. Can we talk to Draupadi Devi? नमस्कार, मेरा नाम गोमती, मैं भारतीय जन सहायता समूह से हूँ। हम जैसे कि आप जानते हैं कि चीड़ की पत्तियां हमारे जंगलों में आग की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा गांव इन्हीं जंगलों के बीच में बसा है। गर्मियों के मौसम में अप्रैल से जून तक चीड़ की पत्तियां सूख के जमीन पे गिरती है। तो इस वक्त हमें डर लगता है कि कहीं हमारे जंगलों में आग ना लगे और ये आग हमारे घरों तक न पहुंचे।
ये आग जंगलों में से पेड़ पौधे छोटे छोटे पशु पक्षियों के लिए भी खतरा हो सकती है। अभी तक ये चीड़ की पत्ती हमारे लिए मुसीबतों के अलावा और कुछ भी नहीं है, पर अब हमें पता चला कि इस चीड़ की पत्तियों से ईंधन बनता है। इन लोगों ने हमें प्रेरित किया कि चीड़ की पत्तियां तक ला के पर किलो के हिसाब से बेचे, और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हमने सब ने इकट्ठा करके थोड़ा तुम बोलो। तो मैम इससे आपके आय में कोई बढ़ोतरी आई है? हाँ जी मैम। तो पहले आप कहीं कुछ और काम करते थे इसके अलावा? कुछ भी नहीं करते थे, ऐसे छोटा मोटा नरेगा वगैरह हो गया बस। तो अब आप कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेते, इसी दिन कितने पैसे मिले? 1500-1800 2000 के लगभग पैसे कमाए हमने 10-12 दिन में। हाँ जी। एक दिन में कितना कलेक्शन किया? 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल के लगभग। So 1.5 क्विंटल एक दिन में कर लेते हैं, 3 रुपए केजी इनको मिलता है। Ma'am, can you ask them, is there any difference in their livelihood? हाँ, अगर पैसे मिलना अच्छा लगता होगा ना कि कितना पैसा मिला, वो तो मैम अच्छा ही लगता है, पैसे मिलने को अच्छी बात है। ठीक है। Thank you so much. Thank you, Draupadi Devi. Thank you, Aarti ma'am and Lakshmi ma'am, for joining us for this session. So for the Sorry, I'd just like to say one more thing which I missed out is that thank you very much. Livelihood at the collection level. I think what's also incredible is that we are, bringing in very young talent to run the machine. So it's not just at collection. So we are really building a strong force of people who are, are understanding that it's not just about bricketing, but it's much more. There's a deeper relevance to it. Hello. Yeah, I think I would like to add, since Lakshmi is now frozen, that it's not only that we are using people for collection and they are able to generate the revenue, but we are also actually we are going into skill development, in the sense we are training these mechanics to actually fix the machine, to run the machine. And because whosoever is coming forward, they need to be supported. So we have identified young boys whom we have partially trained, but now we will also send them to the factory to actually know the details of the machine. Okay, so that they can fix small things on their own. You don't have to call somebody from outside. So it's now, I mean, in my head, what is going on is that I need to move a little bit more toward now skill development, because that it has come out of the project that we need to do that also. We will do that. So basically, this technology eco-friendly provides employment and also creates. Am I audible? Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you for joining us for this session. For the next session, I'd like to invite my colleague Prabhat Ranjan. Over to you, sir. Thank you, Sheetal. Thank you so much. So now we will move on to the fourth session and the last session of the day. And for this session, named as Roundtable Discussion to Strengthen and Nurture the Local Innovation. We have very renowned panel here. So I'll request Professor Nazma Akhtar to switch on her camera. Ma'am, please. Professor Nazma Akhtar, ma'am, please switch on your camera. Professor Nazma, ma'am, can you hear me? Am I audible? Yeah, I'm calling.
Professor Nazma ma'am. We will just wait for a minute. I'm sorry, we are trying to connect with Professor Nazma ma'am. We'll just join in a minute. In the meantime, if I can ask one question to Lakshmi Datta Gupta ma'am. Ma'am, can you listen to me? Yes, of course. Yes. So this briquettes thing, what do you use as a binder? What material you use? So we don't use anything external. So the pine has its own secretion, which acts as a binder. So the heat generated enables it to bind. It does not use it. You don't need any binder. So one attached question with this, that there are some NGOs or some WTPs who are working in other part of country. They are also using in the manufacturing of this briquettes. So they use some kind of binder. If you can suggest if there is any byproduct of these pine needles or something, so that they can use these kind of waste material as binder. As of now, they are using something of wheat flour or some sort of like which can be used otherwise also. Okay. I'll definitely check on this. Yes. What I understand is that They are using agro waste. They are using solid agro waste material, but they don't have that natural secretion from, as you are getting it from pine needles. Right. Right. So they need some kind of binder. Yes. So If I get Aarti, yeah, I think, but what you are asking, sorry, I got interrupted a little bit in between. But so there is something called jigat powder, which is like, powder of the bark of the tree, which is used as a binder, natural binder. So I think you are indicating towards that we can use it as this powder itself as a binder, probably, right? Okay, so bark of any tree or any specific tree? There is, I don't know the details. There are actually, it's a combination of multiple trees, but this is called jigat powder, and that's a natural binder. I'll reach out to ma'am separately for this. Yeah, okay. Thank you so much, ma'am. I'm still waiting for Dr. Nazma ma'am, so we'll wait another 1 or 2 minutes. Apologies from my side. Is Dr. Datta still around? No, I don't see him here. You can convey the message. I will convey to him. No, I just wanted to know that he wanted it to be part of WTP. So in that regard, I thought I'll check with him. I'll check with him separately. Okay, sure, ma'am. No problem.
Welcome, Professor Nazma Akhtar, ma'am. So please switch on the camera. Okay, switch on the camera. I'm there. Can you hear me? Yes, I can. Yes, yes, ma'am. But your image, yes, yes, I can see you also. All right. Hello, ma'am. Hello. Okay, so I'm Prabhat Ranjan. I'm from Vigyan Prasar. I will be coordinating this session on behalf of Dr. Anuradha Pughat. She is in some other urgency. Okay, so this session is regarding roundtable discussion to strengthen and nurture the local innovation. So for this panel, we have very renowned and esteemed panel. This panel will be led by Professor Padma Shri Professor Nazma Akhtar. She is currently serving as Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia. Who doesn't know her? She is a very renowned academician, and she did her PhD in education from Kurukshetra University. She received Commonwealth Fellowship from Warwick University in United Kingdom. In last more than 2 decades of her academic contributions, she has been contributing through various institutions like National Institute for of Education, Planning and Administration from Aligarh Muslim University and other places. She has been working as consultant to UNESCO, UNICEF and DANIDA. She has been relentlessly advocating for gender equity and led various teams in diverse cultural backgrounds. So, and she is also the first woman vice chancellor in a century-old history of Jamia Millia Islamia Central University. She is holding this position from last 3 years, more than 3 years, and not the least, last but not the least, in 2022, this year itself, she has been awarded with the 4th highest civilian award, Padma Shri, from Government of India. I welcome you, ma'am, to this stage. To add value to this panel, we have three other value additions who are associated with us in last 2-3 sessions. Dr. Anil Kumar, Senior Director from MSSRF Community Agro-Biodiversity Center in Kerala. Dr. Vivek Dixit from Department of Orthopedics, AIMS. Dr. Aarti Kashyap from IIT Mandi. So we will start this session. This session will be on integrated community resilience, as we are listening to different panelists, different discussions from last 2 hours, more than 2 hours on in different sector, how this integration in community and community building, community addressing of problems in various sectors. Say, for example, we are listening for health sector, for livelihood sector. We have various sectors like environmental sector, engineering, psychology, sociology, everything as an integrated community resilience. We have various target audience from women perspective, gender perspective, transgender perspective, as we are listening today, from rural background, from urban, semi-urban, from students, for researchers, also for everybody. Means we have very diverse audience in communication. So I welcome you, ma'am. I'll hand over in this stage to you. Please address the gathering. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you. Am I audible? Yes, yes, ma'am. Please go. Okay. Thank you, Prabhat. Dr. Anil Kumar, Dr. Vivek Dixit, Dr. Aarti Kashyap, and Dr. Anuradha Pughat. A very good afternoon for giving me this opportunity. I'm grateful that you have given me this opportunity of talking to you and listening to you also. I'll be concentrating on how a 100-year-old central university has actually
worked in the area of nurturing local innovations, what we are doing. So it's my experience of these years, and I can listen to other experiences also. So as a 100-year-old leading central university of the country, we do realize the role that we are expected to play in the direction of making India a hub of innovation, entrepreneurship, and startups. I would like to take this opportunity to inform you that we at Jamia Millia Islamia, my university is Jamia Millia Islamia, which is Yes. located in Delhi and is a rated university, and it's a central university also. So we at Jamia Millia have established a Center for Innovation and Entrepreneurship in 2015, when all this talk was not so much, but we established it earlier to support the government initiative for skill oriented education in India. We are thankful to the government, in fact, very thankful to the government for supporting us in all our endeavors under this center. We have set up a livelihood business incubator, LBI, under the Aspire scheme, a scheme for promotion of innovation, rural industries, and entrepreneurship of the Ministry of MSME. That's the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises. And we have hundreds of people, especially women, with a view to promote livelihood businesses in a skilled manner and to create jobs rather than make them join others in seeking jobs. So that's something important, that we create people who can create jobs. On the other hand, if to promote the culture of innovation and entrepreneurship in the university ecosystem, we have launched a PG level 1-year diploma course in innovation, entrepreneurship, and design thinking, with a good mix of theoretical knowledge and practical experience to encourage students to set up startups while enrolled in the other courses or in this course. The course is set up as per the guidelines of the Ministry of Education Design Innovation Center. Friends, we have been able to create a range of startups in different domains like EdTech, health and wellness, B2B based startups, and school management systems, robotics, prosthetic hand, etc., which is now in their growing stage. Many startups in the field of medical health education, robotics, prosthetic hand management tools were incubated last 6 years at Jamia Millia Islamia. We have also established the Institutions Innovation Council, IIC, of the Ministry Innovation Cell at the university, and all through COVID. This all happened during COVID-19 too. It has been most active during the COVID-19 in organizing a number of activities, including pitching. Including pitching sessions for probable startups with mentors and investors being drawn from our old students, our alumni based across the world, from Norway, from Singapore, and others. There were several innovation clubs under the aegis of the center, which are working on different projects. We have also launched an entrepreneurship cell under the center. This center, students from different departments of the university part of these clubs, and their innovative ideas are nurtured with the help of experts in their respective fields.
Technological innovations. We talk about technology all the time. So technological innovations is the thrust area of the center. Several products like pre-electric car, Android controlled car, and Android controlled home automation has been developed under the center based on innovative ideas and have been greatly appreciated. We have been able, our students have been able to get prizes and awards based on their innovation. Transport bot, it will bring automation in transporting the crops to market in a timely manner. I'm just explaining what each of them is, so that they stay fresh only for a short duration. That's why they have been transported from the field to the factory at the earliest. The aim of this project is to build a prototype that can put up specific crops crate and put it in a specific disposition zone. Another thing is autonomous quadcopter, a molecular quadcopter with limited sensors to visualize an entire building or an area without human interaction in a GPS denied environment. Modularly will enable the multi-purpose use of the drone and will also reduce the repair costs. These are the important things, that the repair cost has to come down. Making the drone autonomous will reduce human error and effort. CIE, Center for Innovation and Entrepreneurship, is supporting with an amount of 50,000, each one of them. Pre-electric car. This is another thing. One of the team of students working under the CIE developed a pre-electric car. This beneficial for the society and easily affordable by the average earning family. It worked efficiently and does not leave any undesirable substance behind, like in other vehicles which run on gasoline. Hence, its charging infrastructure is valuably used. There's another thing called as innovative card. One of the an eco-friendly food vending card with the provisions of waste disposal and solar power generation. This card was one of the summits showcased at the Festival of Innovation at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. So we are very proud of such small innovative things done and then showcased at such higher levels. Android operated small smart devices using Bluetooth communication. One of the team of students working under CIE developed an Android application for small smart devices using Bluetooth. The center also organizes. These were some examples. The center also organizes regular workshops, training programs, motivational talks, entrepreneurs and alumni interaction. Our old boys or old students and entrepreneurs, they interact with each other, mentoring, process design, and government policies for self-reliance. Atmanirbhar Bharat. More than 50 such sessions are organized annually and very well attended. Now let's talk about the road ahead. Where do we go? India has a lot of scope for innovation in industrial, agricultural, and information technology. The growing economy of India will significantly depend on these innovations. Few important thrust areas of innovation which will be coming in the coming decades can be low-cost automation in small scale and medium scale
industries, agro-product preservation and processing, reuse and energy recovery from industrial waste, using the waste, getting energy out of it, water and wastewater treatment. Because it's not only water treatment, it has to be wastewater treatment too. Energy storage devices, use of IoT in conservation of resources, and low-cost medical diagnosis technologies. This is something which we really want to do, particularly during the COVID. It was very much needed. I am very hopeful that in the next few years, Jamia Millia Islamia as a central university will come up with some more important innovations based on the just mentioned trust areas. And we'll be very happy to share them with you as and when they come. And thank you for inviting me. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for giving an insight. I'd like to ask you, ma'am, that see, this is integrated community resilience we are talking. So this incorporates multidimensional aspects, as we already discussed in the introductory session of this program, that this is from economics to socio-culture, from sociology to psychology. So, and we had done before this session, prior to these two sessions, program on transgender. So how, what is your viewpoints and how do you connect these, especially, yeah, special, since you are working in gender equity also. So these are especially abled people, we should say. As we have understood and we have listened to the society people also, that they are more capable of doing so many aspects. They don't want to be like get apathy or sympathy from the society. So your take on that, ma'am. You're talking about my views about the transgender and how they can be useful in Yes. doing all these things. Yes, technology integration and their upliftment in livelihoods. We have to with the thought that transgenders and the male and female, everybody in this community, in this country, and this community in general and humanity are equal in intelligence. They, each one of them has the urge to do something new. It's not only, it's just a chance of getting an opportunity. With institutions like Jamia Millia or many other educational institutions or can give to them. And therefore I fully believe that anybody from any gender can come and do all these things that we are doing. And we'll be very happy to have them with us if they want to. Because everybody is welcome here. Furthermore, this is Rani Patel, ma'am, you are not audible. Could I speak something? Yes, ma'am, please. Good afternoon, ma'am. It's nice to hear you. And ma'am, giving opportunities equally, it is not the solution. I think if you could give some reservations to the children, and if your institution could give some like discount or like this thing for transgender children to study, I think they are not getting opportunities because they don't have economic this thing. They are not sound economically, and the other thing is they need to be protected. They need to give a space where the other students will like accept them. For that, the counseling both sides is required. Many of the transgender children, they are not able to study in good universities. Though Delhi University has started this, but definitely I would request you on behalf of my transgender children, if you could give them some space and like waive in the fee and all, then definitely they will be able to, and it will be a landmark for your university also.
Are you talking to me? Because in the middle it was just there was no connection. yes ma'am, Are you मैं talking to आपसे me? बात कर रही थी. Yes, Okay. I'm रानी पटेल. हम लोग ट्रांसजेंडर के साथ ही काम करते हैं, और यदि आप लोग यदि इस इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ इनको स्पेशली इनको थ्रू रिजर्वेशंस एंड वेव ऑफ लाइक इनका फी हो सकता है, तो फिर आई थिंक बहुत से बच्चे पढ़ सकते हैं. एट द सेम टाइम उनको एक प्रोटेक्शन शील्ड भी प्रोवाइड करने की जरूरत है. I think I support her idea. Actually, जब तक मुझे लगता है कि if we have an idea, if we want to give them an opportunity, we should also be ready with a shield. That is, initially when they come, they will be looked after separately and looked after well, so that their hesitation at any other level just goes away. And I'm sure the today's generation is much open than it was in earlier times. Yeah. So I have great hope. Yes, I would request the Science and Technology Ministry of Science and Technology plus हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बारे में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नगमा मैम जैसे कर रही हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इन लोगों को एक जैसे हमने एम्स के साथ कोलैबोरेट करके एक लॉजिकल पाथ हमने तैयार किया है. इफ वी कुड लाइक collaboratively, if we could do something, I think these children will not be left behind. And one more thing I would like to add, transgender community को opportunity नहीं देने का मतलब है एक बहुत बड़ा हम criminal base हम तैयार कर रहे हैं. जो इंसान hatred का जो victim होता है, तो वो बहुत जो है violent भी हो सकते हैं, और we have witnessed in our during our work journey with them. Thank you so much, ma'am. I personally feel that opportunity ना देने का जमाना नहीं है आज. We have to give opportunity to everybody, each and every person. जिनको पहले भी नहीं मिली, उनको भी देनी है. And you do not know who will come up with what new idea, and maybe bring laurels to the country. Yes. By applying his mind or applying their own mind. That so for transgenders we need to give opportunities through reservations only. Otherwise, we will not be able to successful providing them dignity anywhere. This is my opinion. So gap areas identified, ma'am. We need to address them through some schemes, designing some schemes. We'll definitely take your point, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think there is some connection issue with Dr. Nazma, ma'am. So we'll get back to her once again. In the meantime, I'll request Dr. Vivek Dixit to address the gathering. Dr. Vivek. Yes, I can hear you, sir. Yes, sir. So please switch on your mic, and I welcome you to this session. So please give your viewpoints on inclusivity, on strengthening and nurturing the local innovation. Can you please repeat the question, sir? So please give your viewpoints, sir, on strengthening and nurturing the local innovation. Local innovations in the community. Yes, sir. I am guided by one belief that व्यक्ति को जीवन में जो उसकी हॉबी हो या जो उसकी हैबिट हो, वैसा उसको करने के लिए स्वयं अपना प्रोफेशन उसे वही बनाना चाहिए. मुझे मैं ऐसा बिलीव करता हूँ. और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जो स्वभाव है बच्चों का, उसे बहुत सालों तक उसे परखा जाता है, उसे देखा जाता है,
और उसकी रुचि, उसकी चित्त, उसका मन, उसकी वृत्ति के अनुसार यदि हम उसे वो उस प्रोफेशन की तरफ ले जाते हैं या उस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए हम उसका सहयोग करते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं ऐसी होती हैं, चूंकि वह व्यक्ति जो भी आगे अपना प्रोफेशन, जिस भी अपनी हॉबी को बनाता है, उसमें बहुत सारा स्कोप ये रहता है कि वो बहुत सारी चीजें जो परंपरा के तहत उसे मिली हैं, उसमें वो अपना भी इनोवेशन जोड़ दे। लोकल लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि मुहिम ऐसी चलाई जानी चाहिए, जो कि मुझे लगता है शायद नई शिक्षा नीति में भी है। कम्युनिटी लेवल पर खासतौर से, चूंकि परिवार घर की पहली पाठशाला है, जहां पर माँ बाप, भाई बहन एक दूसरे को बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं और एक दूसरे को नोटिस भी करते हैं। उसके बाद आता है मित्र, या जो हमारा सोशल या पीयर ग्रुप आता है। तीसरी फिर आदमी आती है हमारी जो नैतिक पाठशाला है, या जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो माता पिता हैं, उनके साथ बच्चा लंबे समय तक, मेरे ख्याल से +2 तक सबसे ज्यादा समय बिताता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें लोकल इनोवेशंस को प्रमोट करना है, तो मुझे ये भी लगता है कि एक तो ऐसा वातावरण बने जहां पर परंपरागत, रूढ़िवादी और वोकेशनल शिक्षाओं को बच्चों का, जहां पर इस तरह की जो शिक्षाएं हैं, जो परंपरागत चली आ रही चीजें हैं, उनको बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा तरीके से थोपा ना जाए। उनको साथ में एक एंसिलरी, एक सब्स्टिट्यूशनरी, एक पैरेलल प्लान भी देने के लिए स्वायत्तता दी जाए कि 10 घंटे में से आप 8 घंटे तो आप वो करिए जिसके लिए समाज आपसे अपेक्षा करता है, परिवार आपसे अपेक्षा करता है, आपको अपना जॉब या कैरियर जिस डायरेक्शन में बनाना है। 2 घंटे आप वो सब करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आपको समाज को देना है। ये 8 घंटे आप अपने लिए मेहनत करने वाले हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अधिवक्ता बनेंगे, प्रवक्ता बनेंगे, जिस डायरेक्शन में भी आप अपना कैरियर ले जाना चाहते हैं। परंतु 2 घंटे आपको वापस पलट करके समाज के लिए, कि मैं एक ऑर्गेनिक यूनिट होने के नाते मैं अपनी क्षमता का समाज के लिए जिस भी विधा में मैं हूं, वहां से मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। यदि एक ऐसा वातावरण बच्चे को परिवार से मिलता है और उसकी छूट उसे मिलती है, और साथ में अगर उसे कोई मोटिवेशन मिलता है, जैसे यदि मैं किसी बच्चे से यदि ये कहूं कि एक अच्छा निबंध लिख करके दिखाओ, क्योंकि तुम निबंध बहुत अच्छा लिख लेते हो, तो बच्चा निबंध लिख तो देगा, परंतु उतने मनोयोग से नहीं लिखेगा जब तक मैं उसे ये ना कहूं कि आज शाम को मोहल्ले में एक कंपटीशन है, आज यहाँ पर जो बच्चा सबसे अच्छा निबंध लिखेगा, ऐसे लिखेगा, उसे प्रथम पुरस्कार भी मिलेगा, साथ में प्रमोशन भी मिलेगा, और उसके लिए पूरे मोहल्ले वाले तालियां बजाएंगे और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। आप देखिए, दोनों शैलियों में जहां पर मोटिवेशन नहीं है और जहां पर मोटिवेशन है, तो मैं 2 चीजों को जोड़ता हूं, रिकॉग्निशन और मोटिवेशन, या इसे मैं एक शब्द में यदि कहूं, इंसेंटिव। तो यदि हम समाज में किसी भी चीज को अगर हम इंसेंटिव या मोटिवेशन के रूप में अगर लेके चले जाएंगे, तो आप देखिएगा कोई भी सामान्य कार्य करने की जो शैली है, उसको परिणाम में मैनिफेस्ट करने की जो क्षमता है, वो तुरंत बदल जाती है। तो बच्चों को अगर इंसेंटिव बेस्ड कोई काम दिया जाए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई भी काम दिया जाए, उनके पास उनकी क्षमताओं में, उनकी आदतों में, उनके जीवन में, उनकी मन में, उनकी वृत्ति में इतनी आविष्कारकता भरी हुई है, वो निकल करके इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हम बहुत चीजें उनके ऊपर थोप देते हैं। समाज उनसे इतनी अपेक्षा करता है कि आपको वो बनना है जो समाज आपसे चाहता है। परंतु यदि समाज ये कहे कि आपको जो बनना है वो तो बनिए, आप जो स्वयं भी बनना चाहते हैं उसके लिए भी एक थोड़ा सा स्पेस है। जैसे आप एक अच्छे वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर एक पेंटिंग करने की कला है, तो 25% का समय आप अपनी पेंटिंग के लिए भी रिजर्व रखिए, और इस पेंटिंग के डायमेंशन को आपको वोकेशनल का भी फायदा मिलेगा, रिकॉग्निशन का भी फायदा मिलेगा, और उसकी स्वायत्तता और उसकी सार्वभौमिकता भी पूरे समाज में आएगी। मुझे लगता है कि परिवार से, समाज से एक बच्चे की मन और वृत्ति को भांपते हुए उसको निश्चित रूप से, चाहे मॉनिटरी, चाहे सोशली, इकोनॉमिकली,
उसे एक ऐसा वातावरण जरूर देना चाहिए कि आपके अंदर जो भी क्षमता है, आप इससे एक समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। वह एक विचार का भी योगदान हो सकता है, वह एक इंस्ट्रूमेंट का भी योगदान हो सकता है, वो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन का भी आगे चल करके रूप ले सकता है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, वो दो चीजें हैं। पहली है इमेजिनेशन की पावर, बच्चे इमेजिन करने के लिए स्वतंत्र रहें, और दूसरा उसे विचार के रूप में तब्दील करें, और विचार ही आगे क्रियान्वित होकर के कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए सक्षम है। तो सोसाइटी के लीडर्स को आसपास के लिए बहुत विजिलेंट, अटेंटिव रहना चाहिए कि हम आने वाली जनरेशंस को, क्योंकि हमने तो वो फल खाए हैं जिनके बीज हमने नहीं लगाए, आने वाली नस्लों के लिए हम कौन सा बीज लगाने जा रहे हैं जिनके फल वो खाने जा रहे हैं। तो ये तारतम्यता, ये टॉर्च बियरर, ये मशाल अनवरत कैसे 20 सालों तक, क्योंकि एक जनरेशन 20 साल बाद बदल जाती है, तो हमारा जो भी कोई प्लान हो वो इस प्रकार का बने कि आने वाले 20 वर्षों में दुनिया किस तरफ जाएगी, बच्चे किस तरफ जाएंगे, समाज किस तरफ जाएगा, क्या आवश्यकताएं पड़ने वाली हैं। केवल तात्कालिक चीजों को न सोच करके बहुत सार्वभौमिकता में, बड़े कैनवस पे, लार्ज कैनवस पे इन चीजों को सोचने की आवश्यकता है। और इसकी शुरुआत बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बचपन से ये वातावरण मिले कि हाँ, मैं जो भी बनना चाहूं समाज मुझे वह बनने में मदद करने वाला है, फिर आप देखिए उनसे बहुत बड़े बड़े आविष्कार होने वाले हैं, उनसे विचार भी आने वाला है और उनसे बहुत बड़ी आगे चीजें भी होने वाली हैं। मुझे लगता है शायद उससे कुछ कहा नहीं। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आपके इंस्टीट्यूशंस में आपका जो ऑब्जर्वेशंस रहा है इस इनोवेशन की तरफ जो काम हुए हैं, उसमें कुछ अगर आप अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशंस और अनुभव शेयर कर सकें तो। देखिए, मैं तो चूंकि एक हेल्थ वर्कर हूं और एक यद्यपि उसका डिजिग्नेशन साइंटिस्ट भले है, परंतु मैं अपने आप को एक स्वास्थ्य कर्मी ही मान के चलता हूं। और बहुत मेरा अपना दृढ़ मानना ये है कि कोई भी बड़ा संस्थान किसी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं बनता है। संस्थान अगर बड़ा बनता भी है तो आप सच पूछिए, संस्थान में यदि 100 लोग काम कर रहे हैं तो संस्थान में 100 के 100 लोगों का वो योगदान नहीं रहता जो संस्थान के 5 या 6 लोगों का योगदान रहता जो उसे आगे लेकर के चले जाते हैं। बाकी के 95% जो संस्थान में कार्य कर रहे होते हैं वो एक सेट पैटर्न पे, एक एसओपी पे ही कार्य कर रहे होते हैं, और वो उन 5% लोगों के द्वारा किए गए कार्य के ऊपर ही निर्भर रहते हैं या उनसे उनका नाम जाना जाता है। तो मैं ये देखता हूँ ना बिल्डिंगों से, ना बहुत बड़े आर्मामेंटेरियम से किसी राष्ट्र, समाज या संस्थान की रचना होती है। समाज में यदि जितने भी लोग हैं वह एक एक व्यक्ति अपने आप में अप्रतिम है, अनूठा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो बैनर्स का मैटर करता है, कई बार जो है वो व्यक्ति मैटर करता है। तो मैं ये समझता हूं कि तक्षशिला, नालंदा से लेकर के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तक सभी जगहों पर सभी समान अवसर खुले हुए हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हुए अपने आप को निखारे और समाज में उसका क्या योगदान हो सकता है, उस गैप को, उस नीड को आइडेंटिफाई करके उसमें अपना योगदान दे। तो हम उस रैट रेस में ना भागे जहां सब भागते हैं। हर व्यक्ति को अपने एक यूनिक सेलिंग पॉइंट को जरूर पहचान लेना चाहिए। दूसरा, मैं ये मानता हूं किसी भी विषय में कभी भी कोई स्कोप नहीं है। स्कोप यदि कहीं है तो वो व्यक्ति के अंदर है। वह यदि चाहे तो उस सब्जेक्ट में स्कोप भर सकता है। आज भी संस्कृत के अध्यापक हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में भी पढ़ा रहे हैं, और बड़े बड़े विषयों के यदि जिनमें स्कोप है, यदि व्यक्ति में स्कोप नहीं है तो भी उस विषय में ज्ञान नहीं खोज सकते। मेरा आग्रह केवल इतना आप सभी मूर्धन्य विद्वानों के बीच, समाज में एक स्वैच्छिक वातावरण योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर जरूर बना रहना चाहिए, जहां पर अंक गणित का विज्ञान कहीं हमारे कौशल पर भारी न जाए। अक्सर ये होता है कि जो समाज में अंक गणितीय वातावरण जो रहता है, जिसे मैं वाणिज्यिक बुद्धि कहता हूँ, तो वो जो सोचने का हमारा कॉमर्शियल तरीका है, हर चीज को मैनिफेस्ट करने का तरीका है, हर चीज को कॉमर्शियलाइज करने का तरीका है, या किसी चीज से हम बिजनेस माइंडसेट से जब तक हम सोचते हैं
तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जो एक प्री रिक्विजिट नहीं कर सकती उस दौड़ में। हमारा काम यह है कि कोई इस रेस में पीछे न छूट जाए। जो व्यक्ति अगर मिट्टी का काम करना जानता है तो हम उसकी भी उतनी ही वैल्यू करें, और समाज में ऊपर बैठे हुए लोगों, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे बहता है, तो ये निश्चित रूप से बड़े लोगों की, बुद्धिमानों की, विद्वानों की, थिंक टैंक्स की जिम्मेदारी है कि समाज के निचले स्तर पर खड़े हुए, समाज के अंतिम लाइन में खड़े हुए हर उस व्यक्ति की योग्यता को उचित स्थान देना भी यह समाज का एक कार्य है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूं, सारे माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिलें। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षक पढ़ाएं। परंतु मेरा प्रश्न इस पैनल से ये है कि कितने माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा शिक्षक बने? तो हम बच्चों को तो अच्छा शिक्षक शायद न बनाने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें तो किसी और विधा में जाने की कोशिश करते देखते हैं, परंतु अपेक्षा ये करते हैं कि समाज में अच्छे शिक्षक सदैव। तो मेरा कहना ये है कि हमारी जो एक समाज की स्ट्रक्चर है वो बदलते समय के साथ भी बदले, और हम अपनी विचारधारा को बहुत संकीर्णता में न ले जाएं, उसे बहुत बिजनेस माइंडसेट की तरफ न ले जाएं, उसे बहुत वोकेशनल की तरफ न ले जाएं। वरना जो लोग बहुत मासूम दिल के हैं, जो लोग बहुत कलावान लोग हैं, वो इस टेक्निकल दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तो विज्ञान का वातावरण आध्यात्म तक भी बना रहे, और आध्यात्म, कला, विज्ञान, इतिहास, भूगोल इस समाज के, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, हमें यदि प्रगति करनी है तो हमें बहुत विविधता के डायमेंशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि भारत में हर व्यक्ति, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, ऐसा कोई पौधा नहीं, ऐसी कोई मिट्टी नहीं, ऐसा कोई जल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जिसमें गुण ना हो। हर चीज में गुण है। मानव तो संस्कार से युक्त है, उसके अंदर भी एक चेतना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम सभी लोगों को एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जाएं, और हमेशा ग्रोथ को डेवलपमेंट न समझें। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दो अलग अलग विषय हैं। कई बार क्या होता है, ग्रोथ को ही डेवलपमेंट समझ लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुद्धिजीवियों की ये जिम्मेदारी बनती है, समान अवसर सबको मिले, और जिसकी जिसकी जैसी योग्यता, जैसे हमारे कहते भी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी प्रकार से, इस प्रकार से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख करके ही हम समाज में सभी लोगों को उनके काबिलियत के अनुसार अच्छी जगहों पर स्थान दे सकेंगे। मुझे लगता है आज मेरा इतना ही कहना पर्याप्त। पॉइंट्स वेल टेकन सर, थैंक यू सो मच। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी हमारे साथ 2 लोग और हैं पैनल में, फिर हम लोग वापस एक बार और बात करेंगे। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर N. Anil Kumar, Senior Director from MSSRF Community Agro Biodiversity Center, Kerala. Thank you very much for having me in this interesting panel discussion. So the big picture which we are trying to see is the community resilience. In the community resilience, how we should strengthen our local innovation, strengthen and nurture local innovations. So I would like to express the kind of, what I am trying to bring over here, based on the experience from the MS Swaminathan Research Foundation. And this organization is one of the largest science-based NGOs in the country. And we look into sustainable agriculture and rural development. That is the larger goal of this organization. So I also would like to remember Dr. Sunil here in this context, who was a good friend of mine. Unfortunately, we lost him. And because of Dr. Sunil, we had a particular project from the seed division of the DST. So with this remembrance, let me come to the subject matter. So when we discuss about the local innovations, as my previous speaker said, though I could not follow much of Hindi, but I could see that how the education
level. We have to start from educating the children. So, but when we look at the local innovation, I am trying to restrict the innovations among the layman, the kind of. So, first and foremost setting is the enabling environment. Do we have an enabling environment to promote the local innovations at the national level and also at the global level? Fortunately, in India and also at the global level, now we have that enabling environment. But we may have the macro level enabling environment. How are you bringing at the micro level? This is where every village in this country has got innovations. Every village in this country has got wonderful traditional knowledge and practices. But unfortunately, we have a kind of approach where we want only the westernized knowledge or the modern knowledge. We think, so first of all, we should see knowledge is knowledge, whether it is modern or whether it is from the traditional system. And an innovation is an innovation, whether it is from the traditional system or in the modern system. So the enabling environment through policies, enabling environment through legal structures, enabling environment through incentives, enabling environment through the culture, the social and the societal practices and customs. So first and foremost is once you have that enabling environment ensured at the local level to the national level, then you can start doing the work on the innovations. Where the first step after this enabling environment, we should see the documentation. What are the innovations available there? We don't have such kind of the approach. We have fortunately Dr. Anil Gupta and the team. They have done a wonderful work of documenting the innovations. So, but the documenting the innovation again, it is a big task. So every village, we should be able to get documented and register the local knowledge on the innovations. This registration and giving petty patents, say the concept of the intellectual property rights for the innovation when it become a technology, if the community gets the protection through the patents at the local level, at least we can term it as petty patents. So the documentation, registration, and the kind of intellectual property recognition, that is the second step. Third level, we should be able to validate this innovation, the validation at the larger context. This is where the modern science comes in. So you cannot just simply ignore the traditional science or traditional innovation. If you see the artemisinin based malaria drug for which Chinese woman scientist received a Nobel, and the knowledge came from the traditional level, the innovation came from the traditional sector. But what Chinese did, they validated scientifically. So this is where India, unfortunately, thanks to DST now and Vigyan Prasar, you are trying to promote science and you are trying to link the traditional knowledge system and the modern system. So this is where the validation, that challenge is India, we have to take more seriously to take up that challenge. Third point, and my concluding point is that if you really want to have a replication of this innovation into a kind of necessary development for the society, this has to be entered into a kind of a value chain. How are we taking this innovation or technology for a larger change? So for which it is a big area. This is where only MSSR now, our example, we look into the, as I said, the sustainable agriculture, where
sustainable food production, and also the in the primary health sector, particularly food has to follow with the nutrition, because now not the calorific dimension alone, but how much nutrition we are able to provide to the society. So there are several local traditions and innovations. We are trying to develop a value chain. For example, the value chain which from the previous session I presented, the herbal products, the primary healthcare products, for which I try to highlight in 3 impact areas. The economic impact of the innovation, whether it is giving income to the household. When I listened to this IIT example, how they had provided income to the community. If the income impact is there, then that innovation or that technology will at least it will be there. The attraction will be there. The second level impact is the social impact. Suppose if this income is coming there, but it is socially or culturally unacceptable venture, we cannot sustain it. So how are we bringing the social impact dimension? The inclusion, your transgender comes in there. Say whether this is inclusive, if it is exclusive to women or exclusive to any class or any creed or no, it is not sustainable. So the social impacts, that the inclusiveness of the social side. And third level impact is your environmental footprint. Suppose if your innovation, that the value chain, it is creating more emission, or it is creating more biodiversity loss, or it is creating pollution to water or air, the environment. So looking into these 3 components and integrating this with the traditional system and the modern system, then we will be able to promote our innovation. And India is a wonderful country. Because of our diversity, we have innovations in every nook and corner. But the problem is the modern society, we are giving up our the heritage strengths in the name of the Western science. So I stop here, and in questions or in the discussion later on, I can come. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And as you mentioned, Dr. Sunil Agrawal's name, we also do miss a lot to him. We have been doing continuously. We had conducted a lot of programs with him. You remember in 2020, December 2020, we have done. You were also present, the Science Society for Atmanirbhar Bharat. So you were also presented, and Dr. Sunil Agrawal had been guiding course for us for seed division in DST and for Vigyan Prasar as well. He was like his contributions are immense. So we do miss him a lot in taking science to society. His contributions were immense, really immense. Thank you, sir. Thank you so much. We'll get back to you. Please be with us. Now I'd like to move on to Dr. Aarti Kashyap. Aarti Kashyap, please come. Hello, everybody. So I'm very pleased to be on this panel for multiple reasons. One, these dignitaries, all of them spoke very passionately about the cause they're working for. I learned a lot from each one of them, and I am doubly proud to see the Vice Chancellor of Jamia Millia for 2 reasons. Of course, she is a very successful woman in terms of accomplishments and everything, and she's a woman. And as a woman scientist, I cherish her accomplishment as mine. So she has been continuously guiding all through her. Yes, so I am very, very pleased to be in the panel where she is chairing the panel. When I got this invitation, I thought this is an opportunity to share the ideas, because the theme is very good actually. Idea, you mentioned that you want to have a discussion about strengthening and nurturing the local innovation. The first question which comes to my mind is that strengthening and nurturing comes later, local innovation is the other part. But do we have kind of environment where we can talk about local innovation at the local level? Okay, so my first observation here is that
I mean, this is not like any scientific study, but we Indian people, we are very good critic. Okay, we are very good critic for everything, starting from Prime Minister to down the bottommost level. We are very good critic. And we generally, I mean, we have been working in survivor mode, our elder generation and even our generation, that we need to figure out how do we survive and how do we sustain ourselves and our family. But I think when we are celebrating our 75 years of independence, I think it's time that we start thinking beyond ourselves and our family. It's time to think like a community now. Okay, and unfortunately, what I find missing in our whole setup is the feeling of community first. Okay, we don't move like community, right? And communities are built up when you have very healthy dialogue, when you have discussions about the problems we as community are facing. As an individual, we face problems. Yes, we find solutions, we survive, right? And we enjoy life. But as community also, we face certain problems. Those problems can be connection through, maybe road transport. It can be ICT related facilities, anything. But as community, do we actually sit together and try to find out the solution for that? Okay, and I believe that until we start this healthy dialogue, a platform or a place where we as community discuss the problems and then talk about what are the possible solutions, local innovation cannot happen. Because local innovation would happen when the community feels the need to change few things to solve our problems. And I'm very pleased in saying this thing that currently, for past few years, we have seen that there is a huge initiative of government to have open dialogues. I mean, I would say that the Prime Minister's initiative, Chai Pe Charcha, should be a routine activity at panchayat level. It should be like, panchayat itself is talking about sitting together, having chai and having charcha, that this is the problem our panchayat is facing. How do we solve this problem? Nobody from outside will come and solve your problem or deploy technology to help you or do innovation for you. So if we want to nurture and this overall culture of local innovation, first we need to learn to sit as community, identify our problems, where do we need innovation, and of course there are primary institutes in the country, there are passionate NGOs in the country, there are many organizations in the country and even international who want to work with the community. But at this forum, I take this opportunity to actually put forward my thoughts that there has to be a very conscious effort now so that we can start talking like a community rather than individual problems or innovations or achievers. So maybe it's high time that communities are recognized for their work done as a community. I mean, we have many we have many awards for individuals for their personal contribution. What if we start recognizing community as a group of people, taking the village, panchayat or town or whatever, what they achieve together? And that's what I think that will actually create an environment of innovation, because it's our own people who are suffering. It's all of us who are suffering as a community for certain things, and we want to solve that problem. And for solving that problem, we are deliberating on solutions. In fact, this is the era of information technology, right? Most of the time, the problems we are facing, solutions are out there, right? Somebody has to sit together, figure out what suits us. Maybe we can adapt a known technology or innovation to suit our needs. That's all we need. We do not even have to probably innovate at some point of time. There are so many things out there. But until and unless we sit as community, start thinking as community, start thinking problem is a community problem, I think innovations cannot happen. That is my point of view for today's topic, and I think then we can have more discussion later. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, sir. Mr. Ranjan, can I put a point? Yes, sir. Because since I was parallelly doing something, I just supplement, but to a certain extent I differ from Dr. Kashyap's view. Innovation always did not be thought about in a structured way. Innovation takes place also within the life and livelihood of the people. And what we are talking about, the local innovation as we understand in a the structured way,
may not be happening at the local level, but people are innovating in their own way for their sustenance. And that is more important than whatever the formal innovation we are talking about. What we are talking about, like, you told about, this is a technical prescription. I have my, the guns ready. I discuss with you what problem you have, I will bring the gun. But if we look at it with the community and how they are solving the problem, first we have to start from there itself. How those problem solving processes can be improved by bringing the relevant. Then identifying the second level of the the problems which needs currently they are not doing in terms of the project formulations, immediate and midterm and the long term. Midterm and long term, they may not be able to see it now, but where the technology, I'm saying the formal innovation system can come in. But what needs change to be, the change needs to be brought in. You have to understand that you made a statement that in local level, no innovation is taking place. I totally do not agree with that, because people for their sustaining, whether you are there and I are there, they are innovating. And that we from the knowledge organizations, the knowledge system perspective, must understand that. So, because we have been taught in the context of an structured knowledge and the structured technology. But life doesn't always go with the structured knowledge. Life, as it goes on an evolving knowledge, wisdom, experiences, and all these things consist about the local innovation. So we have to understand about the body of the local innovation and the formal innovation system. The local innovation system need not be looked from the spec of the formal innovation, the formal innovation system only. Local innovation, and that is the reason, what we are telling, that is very important from the, the livelihood perspective. The time has come to map the livelihood system so that we know what is the variability, what are the demand at a local level. Because, because of our this technocentric approach, if you see whatever the natural resource classification in the country has done, all are supply centric, agroecological zone supply centric, and use land cover mapping supply centric. But where is my demand? So this needs to be changed. So we have to, all of us, like, that is the thing what we wanted to bring in the Techneev, that technological Neev, but the Neev within the branches of the society, which may not be the, as organized as the formal knowledge, but the informal and the tacit knowledge. We have to understand that as in consisting the body of the local innovation. Thank you, sir. So for Dr. Nazma ma'am, there are few questions from social media. If I can, I don't see her right now. Okay, so this question may be taken by Dr. Rani ma'am also from Arohan. This is the same question. Ma'am, are you around? Yeah. Yes, the same question as we have already discussed with Nazma ma'am also, that what can be done to increase the participation of transgender community in SNT? Are there any special efforts towards making trans student startups and become entrepreneurs? Mr. Prabhat, yes. Arohan is working with transgender for last 10 years, 11 years, I think we are working. And we are working with large number of transgender. And what I believe is the transgender, as I think Princey has shared, you will not find any transgender in like upper middle class or affluent class and all. All these transgender are born, I think 60 to 70% transgender are born out of poverty, right? And
we have target intervention projects because of their poverty. Young children, they get involved in sexual activities and they earn through that. Okay, there they are prone to like sexual transmission diseases and transmitted diseases and all. And at the same time, because they are from like poor background where parents are illiterate, they are always maintaining that split personality, which is causing a lot of stress. And for that, lot of antisocial activities are like promoted for that. As I have spoken in my whatever I have shared with you, they are to cope up with that stress. They are using drugs, they are using alcohol and lot many things, and they are confined to a very small group. So for them, I think it is the most important thing to give them opportunities in education institutions, primary education, especially if we are thinking for them when they are grown up, then I think it will not work because already they covered a long way. And if we could inculcate, if we could like really see that at primary level, schools mainly, education could be provided, and that demarcation between like gender, that this girl, boy, and third gender kind of thing, if we will be able to erase that, I think that is the best thing. And they will get opportunities anywhere. इस वक्त में क्यों नहीं हो पा रहा है? द मेन रीजन क्योंकि हम ट्रांसजेंडर एज इट इज ये लोग सारे ग्रोन अप हैं, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम या स्कूल सिस्टम जो है, वी डोंट रिस्पेक्ट अदर्स. ये जो कुछ साल पहले जो औरतों की स्थिति थी, वो आज ये ट्रांसजेंडर की स्थिति है. आई एम श्योर आप मेरे से एग्री करते हैं आरती कि औरतों के लिए भी इतना आसान नहीं था सोसाइटी में, पर हम औरतें पढ़ी लिखी थी, अच्छे से इक्वल, कई घरों में हमारे जैसे घरों में इक्वल ट्रीटमेंट मिला, तो हम ग्रो कर पाए. सेम पर इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से हैं, ये लोग के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये जो गवर्नमेंट स्कूल का मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लाइन बोलूंगी, जो स्कूल में कोई स्टैंडर्ड नहीं होती है मेनली, तो इवन इफ दे हैव पास्ड लाइक स्कूल पास आउट और ग्रेजुएट्स, वो लोग दे आर एज बैड एज इलिटरेट. एंड इन एडिशन टू दिस अनअवेयरनेस इज पैरामाउंट. कोई अवेयरनेस जो है इनके बीच में नहीं, इनके क्या हमारे भी बीच में नहीं है. हमारे देश के पूरे सिस्टम में यदि अवेयरनेस वर्ड आप यूज करते हो, यू टेक द नेम, आई एम रनिंग एन एनजीओ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स. दैट इज व्हाई डे टू डे आई एम सर्वाइविंग लाइक देम ओनली. तो ये चीजें हम लोगों के, आई थिंक मेरे जो यहाँ पर को पैनलिस्ट हैं या नहीं, तो जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको मैंने लोगों तक लेके जाना, उनके साथ काम करना. और आरती की एक बात, मैं आई एम सॉरी, आई विल एड्रेस यू आरती जी. एंड आरती जो बोली है कि हम सबको एक मतलब नेटवर्किंग के बीच में इसको करके बाहर निकालने की जरूरत है. अपने आप अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी. आप मेरे से पूछिए जो कि एक लॉस्ट वर्ल्ड में जो रहते हैं उनको, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, वो एम्स में हैं, या वो आरती जी IIT में हैं, तो इनके वॉइस का वेट, मुझे 15 साल लगे अपने वॉइस को यहाँ तक लेके आने में. ठीक है, रानी जी एक बात मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि हम जो मुझे लगता है जो ट्रांसजेंडर्स की बात मैं कर रहा हूँ, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसको देखिए टेक्नोलॉजिकल और साइंस को ये स्थिति चेंज करने से पहले देयर इज अ बिग सोशल चेंजेस की जरूरत है. और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे इनमें चेंज मेकर्स है, क्योंकि आई एम अवेयर अबाउट इन वेस्ट बंगाल देयर इज अ ट्रांसजेंडर the law officer who has been appointed as a law officer as in West Bengal, and in country में ऐसे ट्रांसजेंडर्स में 3-4 लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर है. like सर आपकी बात को मैं यहीं काटूंगी. आप जो है वेस्ट बंगाल में एक है जो इंडिया में पूरा है,
या नहीं तो फिर आप जो है कहीं पर कोई ट्रांसजेंडर जो है सोशल इसमें है या किसी न्यूज चैनल में है, आप प्लीज उसको काउंट मत करिए। आप देखिए कितने परसेंटेज हमारे। नहीं मैडम मैं नेगेटिवली नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो कल की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हर सोसाइटी की जो डिसएडवांटेज सेक्शंस की अलग डायनामिक्स है। मेरा कहना है कि वी शुड यूज दिस, ये जो चेंज मेकर्स है ना, इनकी मॉडल की तौर पे इनका, बिकॉज आप देखेंगे इनके बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इनकी जो कम्युनिटी जो रहता है वो भी मुझसे निकलना नहीं चाहते, बिकॉज दे स्मोक very high end cigarette, and आप देखेंगे दिल्ली के आसपास में देखता हूँ। सो इनको जो एंट्री पॉइंट में इनको बदलने के लिए वी मस्ट bring before them some of the role model। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपकी बात को फिर इंटरप्ट कर रही हूँ, शायद आप शुरू में सुने नहीं थे। मैं डॉक्टर विवेक के साथ जो बात कर रही थी, क्योंकि ये बच्चे सब करते हैं, इनके पास में शायद पैसे भी हैं, लेकिन ये मानसिक तौर पर इतने लाइक डिमोरलाइज्ड हैं, या नहीं तो फिर ये अपने आप को किसी दे आर लाइक, अभी हमारे घर में एक बच्चा बिल्ली का दिया है, व्हेन आई ट्राई टू कैच दैट चाइल्ड किटन, तो वो स्क्रैच करती है क्योंकि वो अपने आप को सेव करने के लिए। ये लोग भी, तो मैं बार बार आप लोगों से कहूंगी, वो कितने मतलब जो है हाई लेवल का सिगरेट पिए या कितना कौन से 5 स्टार में गए मत देखिए, इनको हमें एक हेल्दी जो है उनको माइंड्स के साथ में हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, उनको एक डिग्निटी की। अभी मैंने भी कहा, अभी रिसेंटली हमने होटल हयात में एक उनके लिए बहुत खूबसूरत सा हमने प्रोग्राम अरेंज किया था, बट क्या वास्तव में वो प्रोग्राम नहीं होता तो वो होटल हयात के अंदर जाते कितने भी अच्छे कपड़े पहन के, तो क्या हम उनको एक्सेप्ट करते? नहीं करते हैं सर। तो मैं ट्रांसजेंडर मैडम मैं तो एक पॉजिटिव वे बोल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी का तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, और इनमें से निकलने के लिए मेरा कहना था कि इज दैट ए वे कि इनमें से जो लोग निकल के आया है एज ए मॉडल, इनको डिफरेंट चैनल के थ्रू में इन कम्युनिटी के सामने दिया जाए। आपकी एक्सपीरियंस में एक दो जने वो आगे नहीं आना चाहते हैं। मैं वही बात बताना चाह रही हूँ मैडम आपने अभी करना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अभी आपने जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, एक जमाने में हमके सामने कादम्बनी गांगुली एक ही थे, और देयर वर ओनली 1 or 2 साइंटिस्ट। टाइम लगता है साइंटिफिक, लेकिन सोशल डायनेमिक्स प्रोसेस टेक्स टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इफ कादम्बनी गांगुली, आज एक गर्ल को डॉक्टर होना आम बात है, बट एक टाइम में कादम्बनी गांगुली हैज टू फाइट विद द सोसाइटी टू बी देयर। तो मैं कह रहा हूँ कि व्हाई डोंट वी really highlight the successful case studies in front of this community? Definitely we are there. That is what I'm seeking support from you people, कि उनको वो जो सक्सेसफुल जो ट्रांसजेंडर हैं उनको आगे लेके आके इनको एक सब्सटेंशियल हम सपोर्ट दें। ये दोनों, दिस बोथ ऑफ द थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड, देन ओनली वी विल बी सक्सेसफुल। एक सिर्फ रोल मॉडल, क्योंकि औरतें जो हम लोगों ने हम ग्रो किए, हमारे साथ हमारे फादर भी थे, लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ में दुनिया में कोई नहीं है इनके। इस वजह से ये एक दूसरे के साथ में होकर के जंगलों में भटकने की तरह भटक रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोले, जितने सारे हमारे जो ट्रांसजेंडर सक्सेसफुल हैं उनको हम लेकर के, आप बोलिए, मैं हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन से 10 ट्रांसजेंडर मैं आपको दे दूंगी जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। आप देखोगे, आप उनको कहोगे वाओ, तो उनको आप आगे लाइए। लेकिन उनको आगे लाने के लिए भी वो नहीं आते हैं, क्योंकि यदि वो आगे आएंगे तो उनके घर, उनके परिवार वाले उनको नोच खाएंगे। दैट इज द थिंग। हाँ आरती, सॉरी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि आई अग्री विद डॉक्टर दत्ता जो कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो सोसाइटल माइंडसेट है वो जनरेशंस में चेंज होता है। तो आज जो सेक्रीफाइस करेगा उसका फायदा कल की जनरेशन को मिलेगा, राइट? सो आई वुड से कि जो सर सजेस्ट कर रहे हैं, वी कैन हैव अ कॉन्क्रीट प्लान इन द सेंस दैट वी शुड हैव रोल मॉडल्स अमंग दिस कम्युनिटी एज वेल, राइट?
and seeing a similar person achieving something gives you so much boost, I would say. See, I started by saying that I'm so happy to see Madam Najma Akhtar, right? Because I just felt connected, because I felt that she's a woman, she's a good achiever, right? So I would say that what Dr. Datta is suggesting, you as NGO, maybe you can propose some model that this is how you would like to put them in mainstream, and somebody has to sacrifice to accept the society this fact that they are transgender, but they are performing and they are the role models. So certain नहीं मैडम, मैं तो यहाँ एक मतलब एक सॉल्यूशंस और एक स्टेप फॉरवर्ड के तौर पे मैं सजेशंस करना चाहता हूँ. यू आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड. आप ऐसे कुछ लोगों को ले आइए. We have a technology enabler like Bharti ji, or we can find it from the other things which हम ऐसे एक काम करते हैं कि एक इनकी जो लाइवलीहुड और इनकी जो घेटो है, इसमें कहीं हम दिखाते हैं कि क्या, देखिए हर अंधेरे में रोशनी होता है और हर रोशनी के नीचे अंधेरा होता है. बिल्कुल, I believe, and I will be highly thankful for that. और मैं ये बोलता हूँ कि मैं सीड के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे हम इसमें एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे. वी विल सपोर्ट कि इनको एटलीस्ट 10 लोगों को हम कोशिश तो करें, उसमें एक लोग भी निकल के आए. सर आप बताइए मैं कहाँ भेजूं, क्या करूं? आपके 10 हमारे रेडी हैं रोल मॉडल्स. मैं आपको रोल मॉडल्स और दे आर हाईली टैलेंटेड. अभी हमने ब्यूटी एंड वेलनेस का इनके साथ शुरू किया था. आई वाज लाइक सरप्राइज्ड. एक अगली आदमी को ये लोग जिस तरह से मेकअप करवा करके ब्यूटीफुल लेडी के तौर पर, आई विल शेयर सम फोटोग्राफ्स विथ यू. यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड. जो हमारे पास में बिल्कुल जैसे एक निर्जरा करके हमारी एक ORW थी. आप मेरे को बताइए, आई विल डेफिनेटली, आई विल, आपके बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, पर मैं वीक हूँ एज अ NGO हेड इन बच्चों को करने के लिए. यदि हम चारों मिल करके करते, दैट इज व्हाट आई एम. मैडम, हमारे ये टेकनीव ऐसे प्लेटफॉर्म की मकसद ही ये है. हम सभी अकेले वीक है, हम सब मिलके हम बल है. Yes, I am like obvious. Say, for example, I propose that whatever we are doing in Himachal, so I have 7 setups, and if DST can support one setup only for run by transgender, this is an established business now, right? And if there is a funding that मेरा कहना है तो मैडम आप जुगाड़ करिए, रूल को बेंड करके कैसे हेल्प करना है हम वो संभाल लेंगे. Wonderful. I think it is the greatest thing happening. Yes, thank you Datta sir. एक करके दिखाइए. हमारे ये टोटल टेक्नीव से रियली सोसाइटल आउटरीच में एक आया है जो द इनमेट्स है उनको, बिकॉज हम क्या करते हैं इनमेट्स को उनको पॉजिटिव रखने के लिए उनका स्किल ट्रेनिंग देते. हमने एक सजेशंस किया था कि डोंट, लेकिन इनमेट्स में बहुत लोग होते हैं जिनमें इनोवेशन होता है. आप उनको इनोवेटिवनेस को करिए. आई विल, हम सपोर्ट करेंगे. Definitely, they are great like innovators. There is no second opinion. They are good artists and they are good dancers. Changes cannot be made in one day. I know, sir. Fire will start with the जो आपकी initial spark है. It has put the spark. Sure. Wonderful. Thank you, ma'am. Thank you so much. I have one additional and last concluding question from Dr. Anil. Sir, if you can switch on your mic and camera. Yeah. Okay, so sir, you have enumerated so many gap areas when you are talking about the technological interventions in society. I know your organization has been working wonderfully and has been technology implemented for so many technologies, numerous technologies. I know the tens of technologies from SSRF which have been included and implemented. So, what is your expectation? Where do you see, since you have been the beneficiary organization also from the ministry level? So, what are your opinion and your future expectations kind of thing, so that we should suggest which we can incorporate? So technologies, the prioritization of technologies, looking into the most disadvantaged classes. Now we talked about the transgender. Definitely,
we have to prioritize such kind of group. Because now India, if you see our commitment to achieve the sustainable development goals by say 2030, if India is going to achieve these goals, the whole world is going to achieve, because the largest population we carry in India. So my first suggestion is to prioritize the technologies based on the priority focus of the needs of the country. So I would say the inclusiveness, that is the most fundamental thing. So we have to have an inclusive growth, inclusive development. Second thing, I would say the DST and the whole Ministry of Science and Technology, they have to, they are hand-holding now. I think it can be further strengthened in the sense you have to raise your funding support, because now if you look at the percentage of our GDP used for science and technology compared to any other transition economy is low. So this, though this scientific policy, this revised policy talks about it, but it is not reaching to the end user, So that I would say funding support is needed for the science. Third point, I would say the consortium model. Now there is a trend because nobody wants to handle smaller projects. They want to handle larger projects. The kind of multi-million projects. Then only you can show impacts. So this is where the kind of now just before the discussion was going in that line. How do we network? So the networking and partnership building. So this is where, for region-wise, say for example, if you take the western region of India or the northern region of India, and based on the kind of, the poverty-ridden sites or biodiversity hotspots and so on. So such kind of prioritization and networking. So I think these are some of the areas which I think we have to work together. Again, the diversity here, for example, the previous speakers, when they speak in Hindi, unfortunately, I was not able to follow fully, So we should be able to have the unified spirit is actually the science and, the kind of technology. So that spirit also we should be able to nurture and inculcate. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. So, with this, I would like to close the session, and I would like to thank Dr. Anil, I think she is not around, Dr. Nazma Akhtar, Dr. Aarti, and from Arohan, Rani ma'am. Thank you so much. So with this, thank you so much. So let me say thank you, Dr. Vivek and Arohan. Thank you, other panelists. Thank you very much. Dr. Aarti, thank you. धन्यवाद अनिल सर.